और लेखक हैं जो मैथिली, उर्दू और हिंदी में लिखते हैं। आप डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय दरभंगा में सहायक प्रोफेसर हैं। आपकी मैथिली में 6, उर्दू में 2 और हिंदी में 3 कृतियाँ प्रकाशित हैं। आप मैथिली और उर्दू में अनुवाद भी करते हैं और आपकी एक कविता BSEB पटना के 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। मैथिली भाषा में आपके योगदान के लिए आपको कई राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ साथ हम वामसी कृष्णन जी, if he is here, Vamasi Krishnan ji, I request you to kindly be with us on the stage. Vamasi Krishnan ji is a poet, critic and a story writer. He has published 6 volumes of poetry, to each of the stories and film criticism, and a book of musings. He has won several awards, including Nandi Puraskaram from Andhra Pradesh government, among other. Krishnan ji, we welcome you to the stage. Thank you so much for joining. PC Murali Madhavan ji, if he is here. PC Murali Madhavan ji, if you are here, I request you to kindly join. और इसी के साथ साथ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी, जेरी पिंटो जी से निवेदन है कि आप अब सत्र की अध्यक्षता करें। Thank you very much for being here, those of you who have managed to make it. Always a pleasure to host a multilingual poetry reading or to be in charge of it, simply because one gets to hear a variety of languages, a variety of sounds, and I hope that all the people here will be reading to us in their native tongues, therefore reminding us of the diversity of the subcontinent. I was talking to Dr. Ganesh Devi the other day, and I asked him how many languages we have in the country. And he said 1,537 and counting. We still haven't counted all of them yet. The Linguistic Survey of India has been done, but it's not complete. I think this reminds all of us that what we have is a responsibility to the languages, and a responsibility, and the responsibility of language is the responsibility of communication. And communication at its highest form has always been poetry. In that sense, we began probably, our first poems were probably lullabies with which mothers put babies to sleep. And perhaps in the process of trying to put a child to sleep who would not sleep, the woman started to pray and said, "Will you please help me put this child to sleep?" And maybe the prayer grew out of the lullaby. And those prayers are sometimes the longest and the oldest surviving forms of our experience of poetry. So while I am often told that poetry is a subsidiary occupation, that there are no publishers for poetry, that people don't read poetry, I beg to differ. I feel that poetry is a constant companion with us. It exists in the form of songs, it exists in the form of lyrics, it exists in the form of anthems. All over the world, wherever Gaza is being protested, it is often protested in the form of a song which people are singing together, raising their voices against tyranny, raising their voices against savagery, raising their voices against any form of suppression of the human spirit. So I think poetry lives with us. It is deeply ingrained. You will find that you remember poems from your childhood often, simply because they have been part of the oral experience of what the language is. And language, though we use it so often and so frequently, we forget how magnificent a gift it is, how wonderful it is to be able to talk of the past, to be able to think of the future, to be able to experience the present, and to be able to sum all these up in the form of poetic expression, of which the gentlemen who have arrived here, there was one lady, but unfortunately she's not with us. So this has the unfortunate distinction of being a manel again. All these gentlemen have in different ways paid homage to our collective experience of poetry. So I'm going to go strictly by the order that is prescribed here
on this program. I will ask all of you to read. I will ask you to be respectful of each other and to time yourselves so that you take 12 minutes. At 10 minutes, I will cough. That is your signal that I don't want to ring bells or say anything. Yeah, I'll just cough. That is your signal to do a short poem. You have 2 more minutes and then to yield the stage to the next person. I won't be reading myself. I want to hear your voices. I think it is a wonderful opportunity for all of us to listen to each other. So we all have 12 minutes, and let us all, in the spirit of humility and in the spirit of celebration, give each other time and give ourselves 12 minutes. Thank you so much. Looking forward to listening to all of you. We have choices. You can either go and stand at the podium and read, or you can sit and read, whichever seems to be suitable for you. I would now request Bijoy Shankar Borman, I hope I've got that right, to please read. Bijoy comes to us from our home, yeah, and it is wonderful to have him here. Thank you, Bijoy, for coming. Good morning, everybody from Brahmaputra Valley. I am Vijay Shankar Burman. First of all, I would like to read my poem, one of my poems in my mother tongue, that is Ohomia. So it goes like this. দদৰাৰ এই সৰিয়হ তলি য'ত এটা বগলী ডিঙিলৈকে পোত যায় কুঁৱলী পোৱা মোৰ মন গহনত বগা এটা প্ৰশ্নবোধক চিনে আজি আকৌ হঠাৎ আঁচ পাৰি ৰৈ যায় ৰূপীয়া বাথানৰ পেট চচা কঠীয়াতলিৰ দুখৰ দুখৰ গৰুহাৰে মোৰ হালধীয়া শৈশৱবোৰত আঁচ জোটাই আৰু ৰৈ যায় Now I am going to read few of my poems in English translation and also two in Hindi translation. So this poem has been translated into English by Nirendranath Thakuria. If the poet's clone tells no lie, if the poet's clone tells no lie, the poet is to live among the thorns. Yeah, among the thorns. The thorns sprout, prick the poet's skin. The thorns chuck the red blood of his heart that lost his peace. The poet knows well. The thorns spread their hood, hit the poet like arrows. Having crawled under the border fence of dream, the poet finds himself in the bed of thorns. Clearing the thorny bushes, what we find is just the poet's shirt. What we find in the shirt is not the poet, but his push only. At the seam of his threadbare shirt, hanging on the thorny fork, is the broken skin of the poet. Just where is poetry? Oh, the narrator of thorns, explainer of evolution. Look, your fingers too are thorns. The pen in thorns. Thank you. The next poem is Fading from the Core. Somewhere there is a likeness
in the makeshift pitch laid on the bed of paddy seedlings at my Rupia Batan. Rupia Batan is my birthplace. Somewhere there is a likeness, the makeshift pitch laid on the bed of paddy seedlings at my Rupia Batan. The flickering light of kerosene lamps at the evening market. The tug at the gillnet at the gloomy sunset. I feel like hearing the scream gushing out of the painting. I feel like decoding the smile, putting it on wavelength. Maybe that feeling is like a dry piece of the bamboo bridge, and it may be like crossing over the bamboo bridge and coming back again. In the bill, the lilies are all aglow. The sun is gleaming on waters. With what chill does the duck dip her head in water again and again? Is it music, waves or stillness, wind or water, nearness or distance, sounds or silence? Thank you. हालांकि मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये हिंदी में अनुवाद किया है विनोद रिंगानिया जी ने। 2 कविता ये। भय। मचान की दीवारों पर कुम्हारन ततैया के अंधे तोड़ते तुमने कहा था कोई फायदा नहीं, तोड़ने के बाद फिर से बन जाएंगे घर। जैसे कंघी सी फटी जमीन को धान के दिनों के बाद फिर से झेंकती है धूप। धू धू कर जलती आग मिल गई अंधेरे में, लाख भरे कंगन की आड़ से तुमने देखा कोई जा रहा है अंधेरी सुरंग से। और शीर्ण हथेली पर तुम्हारा काला मुख, शटियान पैर से ओस टपकने की आवाज, पहाड़ी की चोटी पर कहीं जल रहा दिया मेरी ओर आ रहा कि जा रहा हूं मैं ही। एक दिन ऐसा ही आभास हुआ था जब एक सिंदूरी आम को अंकुश में फंसाया था बगीचे के पास वाले फुटहुआ जंगल में। थैंक यू। और अंत में ये कविता भी विनोद रिंगानिया जी ने अनुवाद किया है। मैं एक औरत के बारे में जानता हूँ। मैं एक औरत के बारे में जानता हूँ जिसने एक अपाहिज बच्चा जन्मा था। मैं एक औरत के बारे में जानता हूँ जिसने एक अपाहिज बच्चा जन्मा था और दूसरा बच्चा पेट में रहते रेल की पटरियों की ओर सुबह की सैर के लिए निकली और लौटकर नहीं आई। थैंक यू। साहब, आपके पास 4 मिनट बाकी है। आप और एक असमिया में एक कविता सुनाइए। इसका शीर्षक है केटेटंगर दुधारी चकुलो। थुलुका मेघবোৰ ওলমি থাকে, মেদুৰ মেঘৰ মাজৰ কোনোবাখিনিত তুমি আসন পাতি চকুলো টোকা আৰু দিহিং বয়। লিডুৰ ক'লা টিলাটোত পুৰা কয়লা আৰু আধা পুৰা এপাত জোতাৰ এন্ধাৰত নে শিৰিষৰ শুকান ধানীৰ
মুগা বৰণীয়া এটা পখিলাৰ লেটাত কণী পাৰিছিল মৃত্যুৱে। মোক আকোহি নিয়া কেতেটঙৰ চকুলো দুধাৰি পাতকাইৰ পানী গছাৰ পৰা নীৰৱে নিজৰি পূৰ হোৱা অংশীৰ সেই পবিত্ৰ পুখুৰীৰ পানীহে আছিল, আৰু তাত হালধীয়া পখিলা এটাই আইনা চাইছিল। থেংক ইউ। May I ask Mridul Dasgupta, who has come to us from Bengal, Bengali poet, to please read. নমস্কার, সাহিত্য একাডেমিকে ধন্যবাদ। Thanks to Sahitya Academy. My name is Mridul Dasgupta. I am from Sirampur in Hooghly district, very near of Kolkata. At first, I will read my one of poem in my mother tongue, Bengali, then its English translation, translated by Onin. Translated by Anindita Mukhopadhyay. There was never anything. Today, we don't have any task. Shan't we play the olive wood Esraj? Is she a flower, a wild flower, pink petaline with scare? Shall we go away? Never a man's fallen love of her. Many lanterns fly. Did someone arrive today? In a withering dark, shan't we play the Hollywood Esraj? This poem also from my book, Jalpai Kathe's Esraj. Clown. Today, in your country, I hid diamonds in my entrails. I will be brought back in the woods. My green cap is lying under the stones. Please don't kill me. My flute is metal wrapped with buffalo's thick sable horn. In gumboots, it is late, give me food. Whose houses are there? Broken clock, church. Will you wake me up at dawn? Listen, I too had a nickname. Sunrise, afloat, the flamingo azul and the gods are writing blue letters for you and for me. And behold the mast
and on the side, atop mountains, lying brimming glass of red wine, and another phenon flash fluttering in the sky. I devour my fingers, O Devi, grace me today. Drizzly. Samudragupta and his Bina, it also from Jalpaikatri's Raj. Dispersed but rootless, mother said, I won't find peace. Dispersed Midul in these dangerous Neptunian waters, phosphorus in torrents. At the other end, someone is hailing as prevenance. Is he a feudal lord? From afar, I think I am God forsaken. I think all this. Who will eat whom? Will I or will the alcohol devour me? I wonder. Someday I will bump into the apple tree and die. I wonder. Let me unfold more, disperse in the air through the travels of the sinful body into the waters. Medulla at one end, I tie my nerves to the toes, at the other playing the bina, self-absorbed, seven-dimensional tunes, disperse, fly away, oh mother, I cannot bring them back. Thank you. Everybody is behaving so well. आप पहले पैनल है जिसपे मैं बैठा हूं जहां लोग अपने पूरे टाइम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. थैंक यू. बट आप अगर और एक बंगाली पोएम पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज. आपके पास 5 मिनट बाकी है. हमें खांसने की जरूरत नहीं पड़ी अब तक. Then I read a few, two Bangla poems, इरशाद. which Please. is very latest nowadays. अरे आप ऑडियंस में भी आप ताली बजाइए, हाँ कहिए, ये प्लीज रीड, ऐसे कुछ कहिए. होश होश बढ़ाइए सबका. आप ऑयल पेंटिंग नजर आ रहे हैं अब तक. No name. এলো না তেমন কিছু, নড়লো চড়লো কত, দুলে গেল পুকুরের পার, ভাসলো তোমার মুখ, বাতাসেও শোনা গেল কত ফিস ফিস, সে কত নিকটের দূরে, ধারণায় ঘুরে ঘুরে মনে ঝোপঝাড়, ডালপালা মেলে দিল, ফেসে গেল মেঘের বালিশ, ভাঙলো ভাঙলো ভেবে তড়িমড়ি ছুটে গিয়ে ঝড় জল সয়ে, তা যেন চোখের দেখা, যখন একটি বার আকাশ সচল, মেঘলা দুপুর বেলা এরপর কেন গেল ক্ষয়ে, আবছা পড়ল মনে, হলে না তো আর জল জল. Another poem, no name. জটিলের জট খোলে, ত্রিভুজ চৌকোনা হয়, দেখা দেয় আশ্চর্য তখন, প্রথমে যায় না বোঝা, স্বাভাবিকে স্ত্রীলোকের প্রায়, পাল্লায় লেগেছে ধুলো, তাতে কিনা 1.5 কেজি বেড়েছে ওজন,
হেসেছ বিপদে পড়ে, তোমার দুনিয়া দোলে ভয়ে ভাবনায়। তাইলে এখানে কেন পাথরে খুদ্দে স্রেফ কয়েক অক্ষর? সমাপ্ত হলো না বুঝি ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবরের, কেবল জড়িয়ে গেলে ভুল তুলে দিলে নিজ গৃহে ঝড়, নেচে কুদে ভেবে গেলে যত সব আগের পরের। ধন্যবাদ। May I ask Guru Ladaki to please read now? Trying to do that. But anyway, so I'm going to read you four of my poems. The first poem is called Farewell is a Shallow Word. Recently, last year, we lost one of the doyens of poetry in India, Jayanta Mahapatra. He was a dear friend and a mentor. So I was in Iowa when he passed away, so I had to write this, and it's called Farewell is a Shallow Word. When we meet first, you stopped reading a poem on Ramanujan. I'm a little surprised. But it takes a river of poetry to smoothen the rough edges and iron off the creases in one's heart. Like a master artist painting and repainting a dragon for years until he becomes the dragon. Generosity comes easy to you. Your gentle, chirpy voice interludes with long and deep thoughts which rest in the cup of your hand. And I am a young man, imagining words and braiding them in a world of temple bells, endless funeral pyres, and a huddle of faceless people drowning in a sea of anonymity. Someone once told me that time is circular. Perhaps you did not die, and I'm just a hologram. We are but fortuitous time travelers, projected in the vast matrix of the cosmos. Farewell is a shallow word. We shall meet again, and maybe I shall learn to cry as empathetically and moisten my forlorn heart. Thank you. And this, just a small side note, this poem has been translated in Hebrew, and it was circulated widely during the attack by Hamas, and it provided, apparently, the person who translated it, Oded Gidali, she said it provided some form of succor to the survivors of the abduction and killing. The other poem, again, is for a person, Mona Zote. She's one of the great poets from India, writing in English. And she comes from a state which is, Mizoram, where the church has so much power, and it's like a Taliban state. So I may be censured for that, but and she is an atheist, and I've written this for her. Mona, only a poet can be a born-again infidel, digging the earth in an inverted land. So split the sky here, lay it flat, and put the roof first before you place the columns, then cast the slab, and finally 6 feet pile foundation of concrete and steel. Those long, aimless hours in a government office melt away hands in Dali's clock. They cannot understand your language, though you have studied and refined it all your life. Your alphabets present a clear danger, imprinting themselves without braille
The razor hills have cut you time and again. The wild grass hides secrets, for its roots have tasted spilled blood. We are drunk on poetry. Mafa, another great poet. Mafa died lashing out his heart with the sweetest songs of bitterness. How much more must a poet pour out, you say, lifting your hands, weighing an obvious disappointment. The world retracts and ignores the grammar of despair. Only the preacher preaches to his flocks. Nothing changes. Hope is locked in a stalemate. For too many young men are eager to die, to save our souls with a book and a gun. Maybe someday, soon, the road ahead will run in reverse. I say, careful, make way for Mona. Last October in Sikkim, we had a terrible flood where a lot of lives were lost, more than 120, and much devastation because of the giant hydro projects, and they burst the dam. I also lost in my my workplace. Almost 20 people died, and we started a transit camp. So it's the T-stat had risen by almost 50 feet. Sorry, it had risen by almost 50 feet. So it's called the Night of the River. When raging T-star storms over our roofs, my child becomes a fish, swimming through rough, muddy froth until he crosses the rings of Saturn. Pause a while. When you reach the Little Dipper, I say, think of your sad mother, alone on the shore, cold and shivering, whose cries are mute. The river swallows my voice too. I now roam the relief and rescue camp, unable to speak, unable to hear, dragging my body through the crowds. Sorrow is the common denominator which binds us all. In a pair of sunken blank eyes, one more child swims across a constellation. Thank you. And the last poem, which I just added, because I think I have a little time. It's called, everybody's heard of Darjeeling tea. And, Darjeeling used to be part of Sikkim at one point of time. So, there's a lot of story behind the tea and what happened environmentally. But then it is only known for its tea. Notes to Dr. Archibald Campbell. He was the pioneer tea planter of Darjeeling. The constant felling of trees for decades filled the valleys with tombs of mute voices. The slashing and burning of undergrowth, the charred earth smell of charnel grounds waiting for a rebirth. And once again, I imagine you on the brow of a hill, serving the lay of the land, sloping swift from the gaze of your eyes. Passionate, you dare dream, ruthlessly efficient as only a Gora Sahib could be. The skies change unnoticed, birds and beasts are displaced as masses of migrants arrive to eke out a living while their masters wallow in luxury. But your presence continues to straddle the horizon, serving an empress, the finest teas in all her lands. Your bearded face left these hills more than a century and a half ago, yet your legacy burdens us with a difficult history. Plagued by division and deception, labor and capital, our stories remain forever contested. O long leaves steep into a setting sun, who will die, love, or profit in the aftermath? Our mountains bear no witness. They are indifferent to human travails and joys. They have been here,
long before Adam took his first few steps as a bipedal primate on the plains of savannah, long before desire, before taste or language. Thank you. It's been a great audience. May I now request Prem Janmejay. Prem writes in Hindi, and welcome, sir. थैंक यू वेरी मच चेयरमैन सर जय पिंटू। अभी मैंने देखा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, और मैं भी व्यंग्य का व्यक्ति हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आया खांसने वाली बात। मेरे साथी जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब, और मैं तो एक बात मैं बता दूं कि गद्य जो है, गद्य व्यंग, वो मेरी स्वाभाविक विधा है, पर मेरा मानना यह है कि रचना का जो कथ्य है वही विधा को तय करता है। और आप देखेंगे जितने भी श्रेष्ठ गद्यकार हुए हैं उन्होंने शुरुआत कविता से की है। तो मैं श्रेष्ठ गद्यकार तो नहीं हूँ, पर मेरी आरंभ भी कविता से हुआ, और मेरे को जो दिशा दी, जब मैं साहित्य के आंगन में घुटनों घुटनों चल रहा था, तो मेरी उंगली पकड़कर चलाने वाले, खड़ा करने वालों में दो लोग थे। गद्य की दृष्टि से नरेंद्र कोहली और पद्य की दृष्टि से कैलाश वाजपेयी। इन दोनों ने मुझे लिखना सिखाया। ये हिंदी ऑनर्स में मेरे गुरु भी थे। और मित्रों, सबसे बेहतरीन जो मुझे लग रहा है, जो आज आप सब जो मेरे सामने मुझे सुन रहे हैं, और मुझे सुनने वालों में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया, डॉक्टर दिव्यक रमेश, वो सामने बैठे हैं और आज के समय के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। और उन्होंने मेरे बारे में जो कहा कि प्रेम जन्मेजय समाज में व्याप्त विसंगतियों और विडंबनाओं के प्रति जागरूक रचनाकार हैं, ये बात उनकी कविताओं में भी आती है। प्रेम जन्मेजय की कविताओं में रूपगत वैविध्य है। तो वही रूपगत वैविध्य जो जिसकी उन्होंने चर्चा की, अपनी अलग अलग रंग की कविताएं मैं सुनाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा एकमात्र जो काव्य संकलन है, मेरी नादान अभिव्यक्तियाँ, उसके प्रकाशक और बहुत अच्छे रचनाकार डॉक्टर संजीव कुमार यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वयं 100 पुस्तकें लिख चुके हैं, बहुत अच्छे प्रकाशक भी हैं। भाई शिमला से आए सुदर्शन वशिष्ठ जी, राजेंद्र सहगल जी। अब आप देखिए, मैं अपने साथ 4 श्रोता तो लेके आया हूँ। बड़ी मेहरबानी। नहीं मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक वो कविता सुनाऊंगा जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी मैं प्रस्तुत करूँ, समझ सकें कि मैं क्या लिखता हूँ। और ये प्रवासी मन की, मतलब जब आप बाहर जाते हैं, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गया था, वहाँ पर ट्रिनिडाड में रहकर मैंने देखा कि 4 वर्ष तक मेरा मन कैसा रहा, और वहाँ के समय को समझा। और वहाँ मैंने जहाजी चालीसा भी लिखा जो मुझे वहाँ पे कहा गया, और जिसका लोकार्पण वहाँ के प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे ने किया था। तो ये कविता है वो गंध कहाँ है। समुद्र गहराई नापता है, समुद्र दूरियां भी नापता है। समुद्र गहराई नापता है, समुद्र दूरियां भी नापता है। ओ मेरे देश, तुझे छोड़ जितना दूर आ गया हूं। ओ मेरे देश, तुझे छोड़ जितना दूर आ गया हूं, उतना ही तेरे पास आ गया हूं, उतना ही तेरे पास आ गया हूं। वही सूरतें, वही रोग, वही सूरतें, वही लोग, वही शोक, वही रोग, सड़कों को धड़ाधड़ नापती वैसी ही चमचमाती गाड़ियां, वैसी ही सौंदर्य को लपेटे खूबसूरत साड़ियां। देखो तो जरा, देखो तो जरा खुली हुई खिड़की से शर्माती दुल्हन सा दिल्ली का चांद। देखो तो जरा
खुली हुई खिड़की से शर्माती दुल्हन सा दिल्ली का चांद झांक रहा है ट्रिनिडाड के आकाश में। अरे ओ नन्ही चिड़िया, अरे ओ नन्ही चिड़िया, भाषा की दीवारों को तोड़ तूने ये क्या गाया? दिल के तारों ने आवाज दी, यही, हाँ यही गीत सुनकर तो मैं अभी भारत से हूं आया। हवा की आंखों के संगीत को, हवा की सांसों के संगीत को अपना हिस्सा बनाते ओ पेड़ों, कुछ भी तो नहीं बदला है तुम्हारा, सच कुछ नहीं बदला है। वही पेड़, वही चिड़िया, वही लोग, वही गाड़ियां, वही चांद, वही आकाश, सच कुछ नहीं बदला है मेरे देश। पर वो गंध कहाँ है जो तेरी मिट्टी से है आती? वो गंध कहाँ है जो तेरी मिट्टी से है आती? बहुत ढूंढता हूं माँ, तेरी गोद नहीं मिल पाती। तो ये कविता जो है वहाँ पे वहीं की एक थी, सुमित्रा चक्रवर्ती भूम्स, उन्होंने इसको अभी अनुवाद किया था। वो अनुवाद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अभी विजय शंकर जी ने भी कहा था और इससे पहले आपने भी कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो उस विषय से मैं आपके साथ एक बात मैं कहूं कि जब हम दूसरे जबान का इस्तेमाल करते हैं तो हम सबको मानना चाहिए कि हम वहाँ एक मेहमान की तरफ आए हैं जी। और मेहमान नवाजी दूसरों का फर्ज बनता है। तो हम अगर किसी को दूसरे भाषा में सुनते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि आप हमारे मेहमान हैं अंग्रेजी में और हम आपका के स्वागत करते हैं। आइए सर। धन्यवाद, धन्यवाद। पर सर मैंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी वेस्ट इंडीज में अंग्रेजी माध्यम से हिंदी को पढ़ाया। ये मैंने बताया आपको, इसका सुमित्रा चक्रवर्ती ब्रूम्स जो मार्टिनिडाड की हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया था। Where is that fragrance? The ocean measures depth. The ocean measures distance too. Oh, my country, having left you, the farthest that I have traveled, the nearest I have come to you. The same faces, the same people, same sorrows, same affections, measuring the roads in a quick successions, are the same shining, glittering cars, wrapping pretty forms the same way are beautiful saris. Just take a look through the open window, like a blushing bright, the moon of Delhi is peeping through the Trinidad sky. Trinidad are Indian art. Trinidad are Indian art. Sameness. Yes, the sameness everywhere. Oh dear little bird Kiskade. यही वहाँ का पक्षी है, Kiskade. Having shattered the barriers of language, what is the song you sing? The strings of my heart say this. Yes, this is very song I heard just before I got here. When you took the music from the breath of the wind, O trees, and made it part of yourself, nothing at all did change in you. Truly, nothing has changed. The same trees, the same tiny birds, the same people, the same cars, the very same moon, the same sky. Really, nothing at all has changed. But oh, my beloved country, where is that fragrance which comes from your soul? I search everywhere, oh mother, but cannot find your comfortable lap. Thank you, sir. धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलाश वाजपेयी जी के उनके प्रभाव में आकर मैंने एक गीत लिखा था और दिव्य कर्मेश जी ने उन दिनों जब हम कॉलेज में थे यूनिवर्सिटी में, इन्होंने संकलन प्रकाशित किया था दिव्यक नाम से, दूसरा दिव्यक नाम से। उसका ये गीत है। अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई, चित्र मिटे कागज पर रेखाएं सो गई। दरवाजे पर जमी पपड़ी वो रोगन की,
उखड़ गई वर्षों में खोई हुई स्मृति सी, हल्की हवा गर्द से तन को भिगो गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। बिखरी हुई कण छाए मरुस्थल की, छल गई मन को आशा में जल की, सूर्य के संसार में आंखें स्याह हो गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। चाहा था दिन में जिन प्यार भरी बातों को, आई तरसाने वही स्मृति बन रातों को, जूतों की पांच तले स्वप्न घास सो गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। शाम हुई रात बिखरी, हृदय में विश्वास हुआ, नैनों की दृष्टि को तारों ने सारी रात पिया, प्राची की सीवन किरणें हाय खोल गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। धन्यवाद मित्रों। एक अध्यक्ष की बात मान लीजिएगा, तालियों बीच में बता दीजिएगा। मित्रों, ये आजकल का जो समय चल रहा है उसको लेकर एक कविता है, आदमी ही मरे थे। वहां हिंदू मरे थे, मुस्लिम मरे थे, क्या आदमी नहीं मरे थे? वहां हिंदू मरे थे, मुस्लिम मरे थे, क्या आदमी नहीं मरे थे? वहां आदमियत का खून हुआ था, आदमी ही मरे थे। जिन छतों पे कभी उड़ती थी पतंगे, जिन छतों पे कभी उड़ती थी पतंगे, जिन गलियों में कभी फूलों के गुलदस्ते, लाल सफेद हरे नारंगी रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते लड़ते थे, झगड़ते थे, अब्बा कर लेते थे, खेलते थे और कई खेल, वहां अब एक और खेल जारी है, एक और लड़ाई जारी है। छतें उगल रही हैं लावा, गलियों में घूम रहा है जंगली पशु, चिथड़े हुई हैं पंखुड़ियां। वहां 7 हिंदू बच्चे मरे थे, 9 मुस्लिम बच्चे मरे थे, क्या 16 गुलाब नहीं रौंदे गए थे? वहां आदमियत का खून हुआ था, आदमी ही मरे थे। एक बुढ़िया के 2 बेटे थे बाहर, एक बुढ़िया के 2 बेटे थे बाहर, एक गुस्से की आग में जला, उगल रहा था आग, दूसरा वर्दी के कंधे पर चढ़ा, बंदूक से उगल रहा था आग, रोकने को आग, रोकने को आग। शाम होते ही दोनों लाशें आ बिछी थी बुढ़िया की दहलीज पे, शाम होते ही दोनों लाशें आ बिछी थी बुढ़िया की दहलीज पे। न मालूम कौन मारा गया था किसकी गोली से, वहां एक दंगाई मारा गया था, एक पुलिस वाला शहीद हुआ था, क्या बेटे नहीं मरे थे? वहां आदमियत का खून हुआ था, आदमी ही मरे थे। मित्रों, एक कविता ये समाप्त हो गई, तालियां बजा सकते हैं आप चाहें तो। मित्रों, एक अगर आप कभी मसूरी गए हों तो वहाँ लाइब्रेरी चौक देखा होगा। लाइब्रेरी चौक बहुत व्यस्त है और वहाँ पे गांधी की प्रतिमा है। तो एक बार मैं इंतज़ार करते वहाँ खड़ा हुआ था और गर्मियों में बहुत सैलानी आते हैं, तो उस पर मैंने लिखा गांधी को लेकर, मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर राजधानी की हर गर्मी से दूर आती जाती भड़बड़ाती सैलानियों की भीड़ में अकेला खड़ा सफेद पोश संगमरमरी मूर्तिवत गांधी। क्या सोच रहा होगा गांधी, सोचता हूं मैं। क्या सोच रहा होगा गांधी, सोचता हूं मैं। अपने से निष्प्रिय भीड़ के उफनते समुद्र में स्थिर निस्पंद जड़, नहीं होता इतना तो कोई हिमखंड भी। खड़ा अकेला क्या सोच रहा है गांधी, सोचता हूं मैं। कोटि कोटि पर एक इशारे पर जिसके बस नाप लेते थे 7-7 हजारों कदम, अंथक आज वही थका सा प्रदर्शन की वस्तु बना साक्षात अकेला। संगमरमरी कंकाल में किताबी मूर्तिवत खड़ा सा क्या सोच रहा है गांधी। स्वयं में सिमटी सैलानियों की भीड़, नियंत्रित करती उनको वर्दियां, कारों की चिल्पों, पुलिसिया स्वर से दबाती सीटियां, एक शोर के बीच दूसरे शोर की भीड़ को जन्म देती मछली बाजार सी कर्कश दुनिया। किसी के पास समय नहीं एक पल भी देख ले गांधी को, अकेले अनजान खड़े गांधी को।
क्या सोचता होगा गांधी? भीड़ में विशाल, भीड़ में वीरान खड़ा, क्या सोचता होगा गांधी? सोचता हूं मैं, सोचता होगा इस भीड़ के बीच में क्या है प्रासंगिकता मेरी? इस भीड़ के बीच में क्या है प्रासंगिकता मेरी? मैं तो बन ना सका भीड़ का भी हिस्सा, बस खड़ा हूं शब्द सा औपचारिक, एक माला के सम्मान का बोझ उठाए, किसी तारीख की प्रतीक्षा में अपनेपन की सच्चाई को तरसता, अनुपयोगी, अनप्रेरित, अनजान, बिसुरता गांधी। हमारे परायेपन को झेलता हमारा ये अपना बंजर बेजान खड़ा है गांधी। मेरा गांधी, तेरा गांधी, अनेक हिस्सों में बटा गांधी, सड़कों और चौराहों को नाम देता गांधी। हमारी बनाई भीड़ में वीरान सा चुपचाप खड़ा है अकेला गांधी। क्या सोचता है गांधी? क्या सोचता भी है कुछ गांधी? धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। फांसी हो गई? खांसता रहा भी मैं और आप सुनते भी एक नहीं कविता, रहे। नहीं, थैंक यू सो मच, नागार्जुन की एक- थैंक यू सो मच। और तीन हैं। धन्यवाद। तो मैं चाह रहा था कि वो जो प्रवासी, मैं मोहम्मद मंजर सुलेमान को बुलाता हूँ मंच पे, वो आप सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित सभी भारत के विभिन्न भाषाओं के संभ्रांत कविजन, हमें मैथिली में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो यहाँ मैं मैथिली बोर्ड में मैं मेंबर भी रह चुका हूँ, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान कवियों के बीच में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। पहिल कविताक शीर्षक थी हमर स्वतंत्रताक इजोरिया। प्रत्येक वर्ष अबैत अछि हमरा जीवन में गणतंत्र दिवस आ स्वतंत्र दिवस। प्रत्येक वर्ष हमरा जीवन में अबैत अछि गणतंत्र दिवस आ स्वतंत्रता दिवस। अबैत अछि एहि दिन प्रत्येक वर्ष हुलसित संपूर्ण भारतवासीक मोन कतेक विशाल, समृद्ध आ खुशहाल अछि। थिक ई हमर देश हिंदुस्तान। हुलसित संपूर्ण भारतवासीक मोन कतेक विशाल, समृद्ध आ खुशहाल अछि। थिक ई हमर देश हिंदुस्तान। फेर ओ दिन आयल अछि अपन भारतक गौरव गाथा के लिपिबद्ध कऽ दी मालाक रूप में कतेक प्रगति उन्नति कयलक अछि हमर देश स्वतंत्रताक बाद। फेर ओ दिन आयल अछि अपन भारतक गौरव गाथा के लिपिबद्ध कऽ दी मालाक रूप में कतेक प्रगति उन्नति कयलक अछि हमर देश स्वतंत्रताक बाद। ई धरती हमर मातृभूमि अछि, एहि भूमि पर लिखल गेल हमर भागक रेखा। मायक कोरा सँ अखन धरि देख रहल छी देशक विकास। मायक कोरा सँ अखन धरि देख रहल छी देशक विकास। भारत के स्वतंत्र करेबाक लेल, स्वतंत्र देश में सांस लेबाक लेल शहीद भऽ गेलाह, बलिदान देलथि। तपस्या करऽ पड़लनि गांधी बाबा के, जहल जाय पड़लैक स्वतंत्रता सेनानी के, तखन हमरा भेटल आज़ादी। भारत के स्वतंत्र करेबाक लेल, स्वतंत्र देश में सांस लेबाक लेल शहीद भऽ गेलाह, बलिदान देलथि। तपस्या करऽ पड़लनि गांधी बाबा के, जहल जाय पड़लैक स्वतंत्रता सेनानी के, तखन हमरा भेटल आज़ादी, तखन हमरा भेटल आज़ादी। ई धरती थिक ऋषि मुनिक जन्म स्थान छैक बुद्ध आ महावीरक, कर्म भूमि छैक नानक आ खाजाक। सब मिल पसारलनि प्रेमक संदेश, विश्व शांतिक उद्घोषक। ई धरती थिक हमर भारतवर्ष। ई धरती थिक ऋषि मुनिक जन्म स्थान छैक बुद्ध आ महावीरक, कर्म भूमि छैक नानक देव आ खाजाक। सब मिल पसारलनि प्रेमक संदेश, विश्व शांतिक उद्घोषक। ई धरती थिक हमर भारतवर्ष। स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्र निर्माताक प्रेरणा सँ, स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्र निर्माताक प्रेरणा सँ, कृषक, श्रमिक, वैज्ञानिक अथक प्रयास आ मेहनत सँ किसान खुशहाल, विज्ञानक प्रगति भेल। गांधी सेतु, मेट्रो रेल आ आन आन प्रगति एकर प्रमाण थिक। गांधी सेतु, मेट्रो रेल आ आन आन प्रगति एकर प्रमाण थिक। तखनहि ने हम छुबि सकलहुँ आकाशक तारावली के, साकार होइत भारतवासीक सपना, साकार होइत भारतवासीक सपना। ई धरती ई गौरव अछि
जतऽ कतेक प्रकार के ऋतु आ माटि पानि, नहर नाला आ नदी से सिंचित भूमि, पवित्र गंगाक बहैत निर्मल धारा, से कतऽ छैक आन देश में, से कतऽ छै आन देश में। ई छैक मात्र हिंदुस्ताने में, ई छैक मात्र हिंदुस्ताने में। मरुभूमि के छिपल बाउल आ बर्फक पहाड़ पर, देशक सीमा पर लौह स्तंभ जकाँ सीना तानने राति दिन ठार, प्रहरीक रूप में हमर रक्षक, तखने नहीं हम देशवासी छी चैन सँ। मरुभूमि के धीपल बाउल आ बर्फक पहाड़ पर, देशक सीमा पर लौह स्तंभ जकाँ सीना तानने राति दिन ठार, प्रहरीक रूप में हमर रक्षक, तखने नहीं हम देशवासी अज चैन सँ। सहिष्णुता सौहार्द प्रेमक इतिहास, सहिष्णुता सौहार्द आ प्रेमक इतिहास ई धरती पर पुरान छेक। कोटि कोटिक लोक, सभ्यता संस्कृति, आचार विचार, भाषा बोली, पाबनि तिहार, पहिरब ओढ़ब, खान पीन फराक रहितो। सहिष्णुताक सौहार्द प्रेमक इतिहास एहि धरती के बड़ पुरान छेक। कोटि कोटिक लोक, सभ्यता संस्कृति, आचार विचार, भाषा बोली, पाबनि तिहार, पहिरब ओढ़ब, खान पीन फराक रहितो। आत्मा सब हमसब एके छी, फराक रहितो आत्मा सँ हमसब एके छी। भारतवासी या हिंदुस्तानी, यह थिक पहचान, यह थिक पहचान। सभ्यता संस्कृति और अस्मिता के निशान, सभ्यता संस्कृति और अस्मिता के निशान। मैथिली में ये हमारी कविताएं, कोई ऐसा उसमें शब्द का प्रयोजन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डायलेक्ट में फ़र्क पड़ा है, नहीं तो सारी चीज़ें तो हिंदी के शब्दों का समायोजन है, जिसको हमको लगता है इसको अनुवाद करने का कोई औचित्य नहीं कि टाइम थोड़ा जो है ना हमको मिल जाएगा कि दूसरी कविताएं भी मैं पढ़ लूँ। आज हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी स्थितियां जो बन रही हैं कि गांव अब विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि गांव की जो सूरत हाल है वक्त और हालात के साथ प्रगति के इस पर जो है ना, तरक्की के इसमें जो है ना वो खोती जा रही है। तो गांवों अब गांव नहीं रह रही है, गांव भी और गांव नहीं रहा है। अतेक उर्वर भूमि छल मिथिला, ज्ञानक छलों विशाल भंडार। अतेक उर्वर भूमि छल मिथिला, ज्ञानक छलैक विशाल भंडार। सीमित संसाधन के रहितो विकासक संभावना छलै कपार। एक बरख त रौदी आयल, दोसर बेर अछि बाढ़ि। बाछा मुइले भीत खसल, बाढ़क पानी छूबे चारि। मिथिला क्षेत्रक लोक कनैत अछि एहि पर हक्कन कनि। रौदी दाही सा कोना मिजायब अपन पेटक आगि। पड़लै प्रभावक नाम विकासे, लोकक बदलल आचार विचार। खुजलै गाम में होटल मोटल, बिलायल अपन हाट बाजार। गामक लोक हक्कन कनैत अछि, नगरक लोक खुशहाल। हमरे शरम सँ नगर चमकैत आ हम ही रही बेहाल। गामक लोक हक्कन कनैत अछि, नगरक लोक खुशहाल। हमरे शरम सँ नगर चमकैत आ हम ही रही बेहाल। चल आबू अब मिथिला में एकरे करू समृद्ध, चल आबू अब मिथिला केर में एकरे करू समृद्ध। आशा नव तुरिया पर अछि, अब हमहूँ भेलहुँ जे वृद्ध। आशा नव तुरिया पर अछि, आब हमहूँ भेलहुँ जे वृद्ध। आइ छी काल्हि नहीं रहब, परसू होयत श्राद्ध। आइ छी काल्हि नहीं रहब, परसू होयत श्राद्ध। अपने रहबै मिथिला रहते मातृभूमि के प्रति रहते श्रद्धा आगाध। मातृभूमि के प्रति श्रद्धा रहते आगाध। इसमें जो अर्थ है कि मतलब मिथिला की जो ज्ञान की भूमि रही है आदिकाल से, उसमें जो हालात प्रकृति का जो प्रकोप पड़ा, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारा ज्ञान के इसमें तो हम लोग आगे रहे, मगर प्रकृति का मार हम लोगों को झेलना समय समय पर पड़ना पड़ा। कभी कभी ऐसी नौबत आई कि 10-10 फीट घर के ऊपर पानी चढ़ गया, फिर कभी ऐसा आया कि खेत बंजर बन गई, जो खाने के लिए रोटी के लाले पड़ गए। मगर अपनी ज्ञान और विद्वता के आलोक में हम लोगों ने देश के विकास में, समाज के विकास में वही योगदान दिया है जो शहर में रहने वाले लोगों ने दिया है। हमारे ही खून पसीने से शहर के लोग खुशहाली को देखते हैं, और हम ही जब गांव में रहते हैं तो वहां हमें रोटी मैसर नहीं होता, जिसकी वजह से हमें भूखों मरना पड़ता है। तो अब लोगों को कहा जा रहा है कि अब अपने ही गांव चले आइए। नए लोगों को, नवतुरिया मतलब नए बच्चों को कहा जा रहा है कि अब आप गांव आएं और गांव की तरक्की और खुशहाली में अपना जो है ना किरदार अदा करें। हम हैं आज, कल नहीं रहेंगे। कल हो सकता है मेरा श्राद्ध हो जाए, मगर आप लोग नए लोग हैं, आप लोग रहिएगा तो आप गांव की तरक्की में आपका बड़ा लंबा योगदान रहेगा। सर अभी टाइम है ना?
जी 2 मिनट से 1 मिनट। नहीं बदलल मुदा बदल गेल, नहीं बदला मगर बदल गया। नहीं बदलल दिन नहीं बदलल रात, बदल गेल जमाना बदल गेल बात। बालपन त दबि गेल पोथी के बोझ तर, अभिभावक भेल टेकुआ महगी के बोझ तर, कोख्ता किराया पर माय बाप भेल बोझ, सास ससुर मम्मी पापा सारू साइरक खोज, रोड पर नाला छै पोखरे छै भरल, गरीब आ दरिद्र छै रोडे पर पड़ल, कहाँ छै पहिलुका समाजक समरसता, सब किछु छै महग मुदा जिंदगी छै सस्ता। भात भेल तरकारी भेल सब्जी, धान आ तरकारी आब कोठे पर उपजी, लोक भेल बाजारू समय छै कनैत, बूढ़ पुरान बैस कऽ समय के रकनैत, बोली पर पड़ले प्रभाव बड़ी दूर के, भाखा कोना बचते से मंजर के यह फेर। मतलब जो हालात बदल गए तो अब माँ बाप को कोई पूछ नहीं है, सास ससुर को जो है ना मम्मी पापा डैडी कह करके जो है ना लोग मुखातिब कर रहे हैं। और तरक्की इतनी तेजी से हो रही है कि आज जो हमारी बोलियां हैं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जब बोली कमजोर होंगी तो सबसे बड़ा प्रभाव हमारी जुबान पर पड़ेगा, तो जब जुबान खत्म होगी तो हमारी अस्मिता, हमारा पहचान, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको बचा करके रखना हम सभी लेख को बोलने वालों का जो है ना उत्तरदायित्व है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जरूर, सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं मुरली माधवन साहब को बुलाना चाहता हूँ। Most respected chair and masters of letters from various regions of this great country. It is a matter of great pride, even though I am not a poet, and I am not anxious to be known as a poet, but still, I used to write Sanskrit poems, both post-modern poems and also traditional poems. This time, the secretary has requested that it should be in classical style, in fully, as we know, some 3,000 or 3,500 years back, the style of Sanskrit poetry, how it flowed through the ages, and that the style of classical style maybe. So I'm going to read 2 poems here, small poems, and one on Lord Krishna, and the other one is on Lord Mugambika from Karnataka. So first I have written a poem here, sitting here, that is on Ganges, the goddess Ganga. Apara karuna chhari parigrihita kashipuri Munindra hridaye chari Vishamanetra cheto hari Maheshwari behischari Janimatam tathandaschari Padabjanata kingari Manasi bhakime shankari. Now on Lord Krishna. Marudgehavasin Murahara Bhavatpada Nalinadvayi Niryanmadhvi Madhurima Samasvada Kutugi Ayam Cheto Bhrango Mama Kimapi Gayatyayi Vibho Hare Krishna Prityir Bhavatu Bhavato Gita Kamidam Sada Namodghoshaihi Madhura Madhurer Bhagavata Satkathakhyaner Navyai cha Bhagavacharu Charitaihi Prabho Bhaktidrega Prasaramahaniyam Vijayate Bhavalkshetram Vishwadhikahitagaram Marutapuram Mahi Vaigundhesmin Prasamara Mrdusmera Lalitam Vibhandam Vishwatman Adula Rujiragara Subhagam Bhajan Sri Krishnam Tuam Siddhajana Samastarthadamiham Bhavakhyan Mukrasyam Adhigabhayadat Kandakivanat Bhavaranye Ghore Chiramihamaya Nandanadhiya Paribhraman Varnanjita Vividha Pushpeshwa Viratam
മധുഭ്രാന്ത്യാ പീതം ഗരളം മധുഭ്രാന്ത്യാ പീതം ഗരളം അധുനാ ശാന്തിരഹിതോ ഹരേ ത്വത്പാദാബ്ജം ശരണമുപയാതോസ്മി ഭഗവൻ. Now this English translation of this poem written by Professor Vijayanath, the great Sanskrit scholar from Tamil Nadu. O Lord Krishna, the omniscient one, the one who slew the demon Mura, and the one who presides over the sacred Guru Pavanapura, my mind, the bee, the mind is bee, the mind, the bee, desires with a tender or passionate longing to relish the sweetness of the honey that flows from your lotus feet towards the end, and it sings something holy. May this afford you utmost deliction. Lord spiritual, by the incessant chanting of your adorable names by devotees at the top of the voices, by discourses being delivered on Sri Bhagavata and other religious texts, and by enacting of plays depicting your transcendingly impressive deeds, that is Krishnatam, the great theatre at Guru Vamanapura, which is your sacred abode, is teeming with religious emotions. It is superior to other regions of the world in promoting the spiritual well-being of the people, and it shines forth in glorious splendor. Lord, in the form of the universe, you are present at present Guru Pavanapura, the abode of Lord Vishnu on earth, which matchless and impressive beauty of form and of form, and from with the perennial and gentle smile marked by arresting richness and grandeur. I worship you who are in the form of Lord Krishna and who grant whatever is prayed for by devotees that have resorted to you. May I become freed from this thorny forest. World is a thorny forest, and the phenomenal existence that causes a full dread. Now coming to the second poem, that is on Mukambika. Kolachalo parigata vinamatsvabhakramalaabhivanchita vidhatri jagadvidhatri Ragashashangamukhi shankara sankaritvam Mugambike mama mano vimali kurushva Srikandha vishavirya nivaranartham Sankirtita vishagidi prathamabhideya Mohamayam mama vinashayadat Tudiya mugdhavalogana mahadbhuda bheshajena Devi kshamaswa bhudushkrita karma pasha samyasta hastajarana paravanidani Yavat bhajesma bhavadim na bhavarti handrim jata kathannu nijakarma phalam jahati Halahalopi tava pelavapani patmalilavalambitataya vijahau vishatvam Vela vilanghi karuna prasarena mohajalan mamatmachasham uddharabadha vegam Stodum nateva puraham prabhavami samyak Yena swayam natadavasyamanalpava Sri Shankaradi kavivarya vachassu kinjidamajjanat janani kindu yate yathaswam Srijandu kavipungava kritamane kathate nutihi
పరంతు తదపేక్షయా విగతవాసనోహంకృతి పరం తు హిన శైలజే పరం తు హిన శైలజే స్తుతిరసేనయన్మాంద్యతో భవంతుద భవత్తనో పరమచింతనాం తాం భజే. Over. Thank you very much. Beautiful singing and beautiful sounds. Thank May I now ask Vamsi Krishna to please... Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good morning to all of you. I am Vamsi Krishna from Vijayawada, Andhra Pradesh. I would like to read one of my poem in my mother tongue to give you the wonderful experience of hearing the wonderful language, as Tamila Subramanya Bharati said, Sundara Sundara Telugu. This poem is about a person who is suffering from Alzheimer's disease and his wife who is struggling with get on with the husband. I would like to this poem in Telugu and English translation also. అతడు మొన్నటి వరకు అందరిలాగే ఉండేవాడు. ఉదయ అస్తమయాల జీవన సంగ్రామంలో గెలుపు ఓటముల మధ్య లోలకంలా ఉగిసలాడుతూ ఉండేవాడు. కనిపించని చీకటి కనులు తెరిచి వెంటబడినప్పుడు, కనిపించాల్సిన వెన్నెల కనులు మూసుకొని ముఖం చాటేసినప్పుడు పెదవుల మీద ఒక నిర్లిప్త చిరునవ్వు రేఖ గీసేవాడు. నుదుటి మీద ముడత పెరిగినప్పుడు, మృత్యువు ఆసన్నమయ్యే సమయం తరగినప్పుడు అతడు కలవరపడలేదు. కాంచన మృగానికై పరుగులెడలేదు. ప్రశాంతంగా ఉన్న కొలనులో తుంటరి పిల్లవాడు విసరిన రాయి కల్లోలం సృష్టించినట్టుగా ఏ అనుభవం, ఏ అనాహుత శరాఘాతం, ఏ నిరాశామయ అవమానాంకురం అతడిని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించిందో అతడు శరీరమాత్రంగా మిగిలాడు. నేనెవరిని అని అతడు అడిగినప్పుడల్లా ఎవరికి వారి భవిష్యత్ చిత్రపటం గుర్తుకొస్తుందేమో హృదయాలు ద్రవించి కరిగి నీరైపోతాయి. నడిరే ఈ సిద్ధార్థుడు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళినట్టుగా అతడు వెళ్ళిపోతాడు, ఏ జ్ఞాపకాల ఆనవాళ్లను మిగలనేయకుండా. అతడి సగభాగం కోసం ఆడుకుంటూ తప్పిపోయిన పసిపిల్లాడిని వెతుక్కునే మాతృహృదయాల ఊరంతా వెతకి వేసారుతుంది. అతన్ని ఒకసారి ఆటోలోంచి దింపుతారు, మరొకసారి సైకిల్ మీద కూర్చోబెడతారు, ఒకసారి జాగ్రత్తలు చెప్పి మరీ పంపిస్తారు. అతడు కనిపిస్తే ఆమె దుఃఖమంతా దూది పింజలా తేలిపోతుంది. ఊరంతా అన్వేషణ భారం తగ్గిపోతుంది. ఇంటి ముందున్న నందివర్ధనం చెట్టును ఆమె కొట్టివేయించింది. ఇప్పుడిక ఒక నల్ల గేటు అతడికి ప్రపంచానికి నడుమ నిలిచింది. అతడు పదే ఆ గేటును బద్దలు చేయాలని ప్రయత్నించినప్పుడల్లా కాలాపాని జైల్లోని యుద్ధ ఖైదీలు గుర్తుకొస్తారు నాకు. జీవిత యుద్ధంలో ఓడిపోయిన ఖైదీ అతడు. నాన్న, ఇటువైపు నుండి చూస్తే తాతయ్య జైల్లో ఉన్నట్టుంది, మనమే అటు వెళ్దామా అన్న మా అబ్బాయి ప్రశ్నకి ఏం జవాబు చెప్పను. Translation to this English poem, Grandpa in jail. He was just like others until recent times. In the dawn and dusk struggle of life, hanging like a pendulum between success and defeat. He was just like others until recent times. In the dawn and dusk struggle of hanging like a pendulum between success and defeat. When the darkness closed with eyes opened, when the darkness chased with eyes opened, when the moonlight hid its face with eyes closed, he used to draw a detached line of smile on the lips. When the fold on the forehead enlarged, when the fold on the forehead enlarged, when the arrival time of the death decreased, he was not bewildered, raced not for a golden deer. As the stone thrown by a mischievous boy, as the stone thrown by a mischievous boy creates a commotion in the calm lake, what experience, what an intrusive wound of arrow, what a desolate seedling of indignity extirpated him with top root, he was left with body. Whenever he questions himself, who am I? Whenever he questions himself, who am I?
perhaps reminds all the future picture, their hearts melt into water. He abandons the home at midnight like Siddhartha without leaving a trace. He abandons the home at midnight like Siddhartha without leaving a trace. His half self searches for him in the whole village. His half self searches for him in the whole village, like a mother who searches for her lost child while playing gets frustrated and dejected. Once he is alighted from the auto. Once he is mounted on a bicycle. Once he is departed with precautions. When he appears, her grief floats like a cotton falls. When he appears, her grief floats like a cotton falls. The weight of search throughout the village, the weight of search throughout the village diminishes. She got the rosebud cut in front of the house. Now a block gate stood between him and the wood. Now a block gate stood between him and the world. When he repeatedly tries to break the gate, I remember the war prisoners of cellular jail. He is the defeated soldier in the war of life. He is the defeated soldier in the war of life. Daddy, from this side, Grandpa appears to be in the prison. Shall we chase the other side? What should I reply to my son's question? What should I reply to my son's question? Another poem, ఎవరూ లేనప్పుడు. ఎవరూ లేనప్పుడు మనకు మనమే తోడు నీడ కావాలి. దుఃఖ సముద్రాన్ని దాటే సేతు ఏదో మనమే నిర్మించుకోవాలి. పండ్లు ఇవ్వని పూల జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది. ప్రవాహం మధ్యలోనే ఆగిపోతే శిఖరాన్ని నిందించడం ఎందుకు? పరిమళ ప్రవాహాన్ని దోసిట నింపుతోంది కదా. జీవితం అర్థాంతరంగా ముగిసిపోతే మృత్యువును నిందించడం ఎందుకు? మరో జన్మకు దారినిస్తుంది కదా. ఎవరూ లేనప్పుడు మనకు మనమే తోడు నీడ కావాలి. దుఃఖ సముద్రాన్ని దాటే సేతు ఏదో మనమే నిర్మించుకోవాలి. పండ్లను ఇవ్వని పూల జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది. ప్రవాహం మధ్యలోనే ఆగిపోతే గిరిశిఖరాన్ని నిందించడం ఎందుకు? పరిమళ ప్రవాహాన్ని దోసిట నింపుతోంది కదా. జీవితం అర్థాంతరంగా ముగిసిపోతే మృత్యువును నిందించడం ఎందుకు? మరో జన్మకు దారినిస్తోంది కదా. గుప్పిట నుండి జారిపోతే జీవితం వగపెందుకు? గుప్పిట నుండి జారిపోతే జీవితం వగపెందుకు? వగచిన ప్రతిక్షణము ఒక కావ్యమవుతుంది కదా. మురిపించిన మేఘం వర్షించకపోతే దుఃఖం ఎందుకు? దుఃఖించిన ప్రతిసారి ఆత్మ శుభ్రపడుతోంది కదా. ఎవరూ లేనప్పుడు మనకు మనమే సహస్ర బాహువుల సమరయోధులం కావాలి. పండ్లనివ్వని చెట్టు కూడా నీడనిస్తుంది కదా. పిట్ట పాటనిస్తుంది కదా. పచ్చటి ప్రాణం ఇస్తుంది కదా. పరిమళమువ్వని పువ్వుల జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది. When there is none, we should be our own companion. We ourselves should build a bridge to cross the ocean of woo. When there is none, we should be our own companion. We ourselves should build the bridge to cross the ocean of woo. The life of flowers which do not turn into fruits is also significant. The life of flowers which do not turn into fruits is also significant. Why should we blame the hilltop that stops amidst the stream? Why should we blame the hilltop that stops amidst the stream? Is it not feeling the fragrance of flow in coupled hands? Is it not feeling the fragrance of flow in coupled hands? Why should we blame the death if life ends abruptly? Why should we blame the death if life ends abruptly? Is it not paving the way for another birth? Is it not paving the way for another birth? Why should we lament when the water slips out of the fist? Why should we lament when the water slips out of the fist? Does not every moment of grief become an epic? Does not every moment of grief become an epic? Why should we wail if the kerosene cloud escapes without raining? Does not the grieved soul clean every time? When there is no one, we ourselves should become the knights of thousand arms. When there is no one,
we ourselves should become the knights of thousand arms. The tree that does not yield fruits also gives the shade and songs to birds, also others green life. The life of flowers which do not emit fragrance is also significant. The life of flowers which do not emit fragrance also significant. Thank you, sir. Thank you. You've been a wonderful audience. Thank you all to the poets. Thank you to the Sahitya Academy. And we have been, I think, kept perfect time. Right, madam? Thank you so Absolutely, much. sir. No, no, not at all. I will read to you personally downstairs. Okay, thank you so much, sir. That was wonderful. Thank you so much, Jerry Pinto, sir, for chairing this session so wonderfully. At the same time, I thank Guru Ladaki ji, Mridul Das Gupta ji, Bijoy Shankar Burman ji, Mohammad Manzar Suleiman Sahab, Prem Janmejay ji, thank you so much. Or we also would like to thank PC Murali Madhvan ji. He is a renowned scholar and teacher with huge student following and recipient of many awards. Thank you, sir, for joining us today. And last but not the least, we would like to thank Vamasi Krishna ji for this wonderful session. आप सभी का हम उपस्थित मंच का धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ सभागार में उपस्थित हमारे सभी बाकी महत्वपूर्ण गणों का भी हम धन्यवाद करते हैं। आप सबसे निवेदन करेंगे अगला सत्र हम 11:30 बजे से 12 बजे से यहाँ पर शुरू करेंगे। आप सब 12 बजे यहाँ पर ज़रूर पधारें। नमस्कार।
का अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव के रूप में इस वर्ष के साहित्य उत्सव को देखा जा रहा है। साहित्य अकादमी अपने 70 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में इस वृहद विशाल आयोजन को आप सबके साथ साझा कर रही है। आप सभी इतने माननीय लेखक हैं, हमारे कविगण हैं, स्कॉलर्स हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं। आप सबकी इस साहित्य उत्सव में गरिमा में उपस्थिति है। आप सभी को हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सब जानते हैं ये गोस्वामी तुलसीदास सभागार है। आज साहित्य उत्सव का 5वां दिवस है और यहाँ से अब हम इस समय दूसरे सत्र की ओर आरंभ कर रहे हैं। दूसरे सत्र का हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये सत्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी रीडिंग का है, कविता पाठ का है और हमारे कुछ माननीय लेखक कविगण यहाँ पे उपस्थित हैं। उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले इस सत्र को जिनकी अध्यक्षता आज प्रदान होगी, जो इस सत्र को चेयर करेंगे, मनु बालीगर जी, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आएँ। सर, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज। आप एक प्रख्यात कन्नड़ लेखक हैं। आप कन्नड़ क्रिया समिति KSRTC के गौरवाध्यक्ष भी हैं। आपकी विभिन्न विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। साथ ही आपने महिला साहित्य संपुट और दलित साहित्य संपुट के 10 खंडों पर काम किया है। आपने कन्नड़ शब्दकोशों के 8 संस्करणों और अन्य 140 महत्वपूर्ण पुस्तकों का डिजिटलीकरण भी किया है। आप नेपाल सरकार से नेपाली सम्मान पुरस्कार और नादोजा पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आपको कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ हम मंच पर शशिकला एच जी को भी आमंत्रित करते हैं। मैम, आपसे निवेदन है आप मंच पर अपनी उपस्थिति दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ कन्नड़ा इन Bangalore University. She has 4 collections of short stories to her credit, beside many of her research papers which are published in reputed periodicals and journals. She has presented about 4 dozens of research papers in national and international conferences, and she is a recipient of Karnataka Sahitya Akademi Award and Karnataka Rajya Utsav Award. शशिकला जी, we welcome you on the stage. Thank you so much for joining. हम अरविंदा रे जी से भी निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आएं। Ladies and gentlemen, Arvinder Ray, a versatile literary genius of modern Odisha, writing stories, novels and plays. Dr. Arvinder Ray has 18 collection of stories, the short stories, 7 novels and 7 plays to his credit. Beside his noteworthy immense contribution to the world of children's literature. Arvinder Ray ji, we welcome you to the stage. Thank you so much. जया जदवानी जी जब आएंगे हम उनको ज़रूर मंच पर आमंत्रित करेंगे और इस समय मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ भारती बालन जी को। भारती बालन जी, ladies and gentlemen, S. Balasubramaniam is a notable creative writer in Tamil. He has written short stories, novels and critical essays, has published 7 volumes of short stories, 3 novels and a collection of essay. He has also edited 5 collections of Tamil short stories. His short stories have been translated into English and Malayalam as well. He is on many academic committees of universities, had served as a member of General Council of Sahitya Akademi as well, and he is recipient of many awards including Tamil Nadu Government prestigious Mahakavi Bharati Award. Sir, we welcome you. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और इसी के साथ साथ अब मैं मनु बालीगर जी से निवेदन करूंगी आप सत्र की अध्यक्षता करें। Good morning, everybody. Thank you, Bharti ji, for having introduced in a very well manner. This is, as already Bharti ji has told, short story reading session of the world's biggest or largest literature festival being held in Delhi for 6 days. Really, it is a matter of pride for everyone. The participants, the scholars, the audience, everyone who has come here to participate in this August conference.
This session involves 5 writers from 4 languages. On my right is Professor Shashikala H., a Kannada scholar and a short story writer, and she works in Bangalore University, as she has already told. And Sri Arbindo Ray, Odia language. Jaya Jadwani has to join us later on. She may join. Bharti Balan. Oh, right. Oh, Tamil. Very nice to know you. Say she comes, we will think that she would join us in a short time. So 90 minutes to be distributed in 5 persons. Roughly about 15 minutes to each of us. Remaining 5 minutes you will take. So 80 minutes will go. If 10 minutes are remaining, I will give my remarks as presidential address. It lost. So now I call upon Professor Shashikala H., Kannada writer, to present her short story. Thank you, sir. Respected Chair Shri Manu Baligarji and my fellow story writers. Today I am going to present my short story named A Night in the Monsoon in front of you. This story was first published in Lankesh Patrike. Lankesh, as you know, is one of the famous Kannada storyteller and has won the Central Sahitya Academy for his stories. How much has the water flown down from the first publication of my story and present time? Whatever the wheel of time has rolled, the change in a woman's life is like a snail's movement. Again and again, I felt that the inner eddies of this story are the experiences of women even in this era. So I decided to read this story before you. This story is one from my collection of stories published by the title Masukidi Mabbinalli. All these stories here revolve around the women in one way or the other. These are the stories that come out as if they wanted me to write, because when I wrote these, I did not consciously set out how to write or how I am going to set this. But all these have come and stood in language as part of my experience. You may call it as these are all discourse or discourses in the form of stories. The title of this collection was picked from one line from the translated poem in Kannada, that is, B.M. Shri has translated a poem originally written in English by Cardinal Newman, a priest who wrote a spiritual poem called Lead Kindly Light. This poet was under the stress of mental anguish and physical pain. He was praying God for the light to lead him to the new spiritual path. A part of that poem is as follows: Lead kindly light amidst the encircling gloom. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. At the end of the poem, there is a hope. For a woman, there is no hope of getting light. That is why they are stories of continuous search in an encircling gloom. So the title is Amidst the Encircling Gloom. If a woman consciously set out to build her life and existence, she has two options. One is to live within the framework of the established society set by the man, or to find inner ways to shape one's life.
So my strong feeling is that she will live in the present suffering. That is her existential trauma. When the question of existential comes, I remember Jean-Paul Sartre. He has he has raised the question about the existential philosophy during World War II. But Simone de Beauvoir asked about the place of women in traditional and all over the world. So, according to Beauvoir, she asked, men are subject while women are the objects. Our traditional culture would provide much interest and direction in the social narrative of women, that is, beautiful girl or good wife or good daughter-in-law. These are all the models set in front of us. In my story, A Night in the Monsoon, which I am going to read now, is a picture runs like this. Life has become completely mechanical. There is a wait for the one who has to come but wouldn't come. The loneliness of the night, the rain of monsoon is trying to penetrate the closed door like a giant force. It doesn't care much to know whether the earth wants it or not. At last, monsoon rain will slowly stop. The mind remains anxious, tense, and searching. At the time of writing this note, I remembered the romantic song from the old Hindi film, Savan Ka Mahina, Pavan Kare Shor. Women experience has suffered beyond this romantic song. But the story is one such. Actually, I write in Kannada using more colloquial words. Colloquial words carry the beauty of language. That is, the magic feature of the language brings so many emotions, so many things to the story that cannot be translated to English. So I have kept colloquial words like blok, bolok and all, so many things as it is. Kindly bear with me. A monsoon in the dark. It was one evening. My work was over. I am surprised to say that it is completed because I am not in the habit of finishing all my work at a time or immediately. Work may be writing, reading, cooking, or anything. I do when I am in mood. When I am not in my mood, I will be walking here and there as if I haven't seen my work at all. Thinking that after finishing my house chores, let me give my head to a book while the time 7 rang. Oh, news will telecast now. I turned on the television. Newsreader herself appeared to show her face to read the news. I started watching her. Slowly, my attention was grabbed by her sari. We, the women folk, why do we always think about the sari? Is this our natural weakness, or are we behaving by listening too many? Still, I do not know. Is not that the sari is attractive or not, but what attention was caught that combination of the body of the sari and border is not attractive. Then my mind suggested many possible combinations. No, I did not satisfy. Then I decided to watch the news. Where is the news? I turned my head towards newsreader. I heard the voice. Now news is over. Some serial. I brought out my mind to calm
which was fretting about not having got the correct combination of the sari. While walking in the backyard, I saw clothes were dried. Thinking to take off the cloths, I raised my head, became cheerful after seeing the stars, which were looking at me with their opened eye in the sky. Folding the cloths also over. What to do is the next question. Again, thinking to read the book, started turning the pages. My mind suggested me to lay down and read. I decided to listen. Book started to transfer its stomach full of material to my mind. During the transferring process was on, I woke up to some sound. While transferring process was going on uninterruptedly, my hand could not resist the weight of the book, kept it on my eyes. For the weight of books, my eyes were closed. But the sound, something crackling was on the sheet of the roof, like mustard sheets. Cold breeze entered through half-opened window. Oh, must be rain. By 7:15, the sky was clearly visible. I looked at the clock. It's 10:30 already. Still, the sound of the gate is not audible. Wouldn't it be nice if those who went out come home on time? Who's on time exactly? To those who wait or those who come? Popping mustard seed became a throwing stone. I got up and closed the window, then covered myself in the blanket. The sky was feasting to the eagerly waiting to the thirsty eyes of the earth, which was waiting and looking at the sky. When the rain will come? Whatever is given by the sky is filling in the bosom of the earth, but there is no opportunity to the sky to give how much she wanted. Vasundhare has to be satisfied with whatever she gets. I was looking at the top sheet of the house by lying on the bed, heard the bullock sound. I immediately got up and saw water was rushing through the door. Why? Why you did not turn your face to see me? See, no matter how long you haven't come, but I have come myself to see you. Like sparkling water appeared. I like my house that fills me inside. I tried to stop the rushing water, thinking that you don't come between us. We shall be all alone. The more I tried, the more stubborn water became. Let's go. You are the third one, I said. While sticking my eyes to the sheet, electricity is gone. The wind became fiercer. Rain came to mustard seed size on the roof. Looking at the three of us, the mango tree standing in front of the house started to rustle. The house did not afraid. It gave me courage. Only the water took the face back and left. Now just tap, tap, tap. Because of no space inside the house, many were thrown out. Among many, waste tin started singing. The standing broken old swing machine and plastic bag continued the same. It was as if a tree was made to bend in anger and these were made to sing together. Dubak, dubak, tap, tap, tap. What are you doing inside? Come outside. They started calling me with dubak, tap, dubak. Electricity appeared as if saying,
Go and see outside. I opened the door and looked at the leaf, which is sparkling the new light and the water, washed away all the mess from the roof and now lying in front of the house. The old steel bucket standing in front and showing everything in its stomach, and the mud where I stood, absorbing all the water that had fallen. What is the relationship between sky and the earth? Absorbing everything and now standing empty. Is she not satisfied with what she has given? Are giving and receiving entirely different things? Does what she receives the same what she expects? But whether she likes it or not, the torrent is tied in her lap, then emptied, again waiting. The clock rang. I turned around. 12. I saw the water on the leaf, throwing the light from the front. But as I look at the ground below, felt to ask, are you happy? Are you happy? Thank you. Thank you, Professor Shashikala. And next is, you are also Professor? Dr. Arbindo Ray from Odia language. Please. Thank you, sir. Good morning to all present here. Thanks to Sahitya Academy. Special thanks to Dr. Gaurav Das, eminent story writer and Odia Advisor Board convener, who is present here, and my friend Baljit Singh Raina, a good writer, Lipi Pushpa Nayak, and everybody present here. My story, original story name is Andhara Jatiki, Alua Chetiki. Andhara Jitna, Ujala Utna. In English, this is in light and shade. The background of the story is Mahabharata. Draupadi Beni Bandhan, the Mahabharata is the background of the story. Take it from me, the drama will definitely be staged at Pritipur this year too. Master Bhimasma Senapati said emphatically to Dhaneshwar, tapping the harmonium reeds thrice. Dhaneshwar alias Dhanvasahu had been sitting before Senapati with all humanity till now. Slightly frightened by the angry visage of the maestro, Dhaneshwar said flatteringly, how it is possible? How is it possible, master? Don't you know? Kaliyajana has a flesh that he will not let the drama be staged if you don't allot the role of Dushasan to him in this year's play, Beni Bandhan. He who has created this universe is the greatest director. Everything, including the sun, the moon, Brahma, and Maheshwar, dance to his tune. All dramas will stop only at his distance. Oh, Kaliyajana, Kaliyajana will be the Dushasan. What a joke! Does the uncultured fellow know who is Dushasan? He is the prince of Hastina and the son of King Dhritarashtra. Is Kaliya worthy of comparing himself with him? How dare he say he won't allow the play to stage? Who is bloody fool? Although the master was cry and pleasant to hear, it was difficult for Dhanwa to forget Kaliyajana's challenge. He swallowed saliva twice and said, Sir, whatever you say is true, but he is an evil murderer. He from village youth in its favor, he says, why only 10 to 15% will take part in the drama and a few of them play the role of kings and ministers always? We will arrange the finance and they will enjoy. What for? This time you will be the audience, they will be the audience, and we will play the roles.
Ha ha ha. Bhishma Senapati wrote in laughter and said, Hey, Dhaneshwar, what do these miscreants think? This is not only an ordinary skill, it is called Gandharva Vidya, the science of divine music. Every Tom, Dick, and Harry cannot perform it. No, never at all. Dhaneshwar rolled his palms around each other, he shrank like a millipede. Bhishma Senapati said, Do you know one needs years of practice to gain fraction of this knowledge? It is any demonical skill into skilled men. Had any ancestors of Kaliyajana ever played in drama? He aspires to play in drama. Nonsense. This time Dhanwa looked all around warily and said affirmatively, Exactly. Everyone cannot play instruments, not can they sing. When the rehearsal was flooded with song and music, Dhaneshwar started again, Sir, I mean to say this Kaliyajana, stop chanting the name of Kaliyajana. You have been doing it for hours. Look here, Dhanwa, right from my childhood, drama has been staged here in our village every year. Why do you think like that? You never fellow. Did not I tell you the one except Almighty God can stop it? It seems you don't have faith on Him. What type of celestial music will you practice? Dhanwa said, That is right, not a leaf falls without God's will. But Kaliyajana had never believed in gods. He was a strong-built, tall man with arms like two iron marks, two thick gold chains with tiger nail talisman hung on his hairy broad breast. He wore a copper bangle on his right hand and 5 to 6 gems stuck on his fingers. His mustache and beard had grown wild. A few pockmarks were clearly visible through the beard. Sometimes his beard fresh, soaked in sweat, looked like a dry beehive. He rolled and walked like a tiger. Kaliyajana, the murderer, was released from jail 2 years earlier. Whenever he drives his black motorbike along the village, the enemies stand on pins and needles at the robust throaty roar of his bike. It appears as if the god of death is out to take someone's life. The MLA, police officers, and some contractors are among Kaliyajana's friends. So money is not an issue for him to enjoy life as he wishes. He does whatever he likes by hook or crook or even by force. A group of young men of the youth club are always with him like bees around the beehive, waiting for his signal to march like messengers of death. The so-called messengers of death announced at the festival ground, our Kaliyajana has said that he will play the role of Dushasana in the drama this year. He has said, and it will be done. Anyone who objects cannot live in this village. This time, no male actor for the role of Draupadi will be allowed. Kaliyabhai has given an advance to Ranu Mishra to play the role of Draupadi. There was a hue and cry in the entire village hearing the name of Ranu Mishra. A few of the villagers had seen her acting, but there were a lot of stories about her. The excitement of villagers who had silently heard the announcement about her search of, will she really come to Pritipur? People knew she was beautiful. Her body exuded the fragrance of the lotus. Some also knew that she was a firebrand. Any lustful hand that touches her gets burnt. It was also heard that she was going to join politics. Ranu Mishra was a normal human being despite the variously connected stories and legends about her. She had lost her husband at the age of only 20. She had a 6-month-old child. She had married when she was in college and had to discontinue her studies. Her in-laws threw her out of the house, labeling her as responsible for her husband's death. Just then, her cousin asked her to play a small role in the drama of an amateur theatre group. She was paid 500 rupees for the first time. It was on that day that she decided that acting was her profession, which she considered a small boat on the vast sea. Since that day, rumors had surrounded her. People gossiped that
She earned large amounts. Political leaders and touts came to her at night. These were the kinds of rumors spread about her, but she could not care less. Ranu Mishra is the center of gossip at Pritipur. While returning from the market, Bidai Sahu told Sukuna Maharana, "Do you know a fairy is going to play Draupadi in our village drama?" Sakuna Maharana would meet Kaliyajana occasionally, only because had he got an Indravas, he roughly said, "Fairy? No, no fairy. She is a very dangerous woman. She exploits the rich as much as possible. She knows the trick of enchanting people. Once our Kaliyabhai had gone to her, she drove him away with filthy languages. Where will she go? She has been caught in Kaliyabhai's net. She cannot escape. Kaliyajan has brought her to his fold by hook or crook." Bidai Sahu said, she comes to act. How she is caught in the net? Ha ha ha. What a fool you are. You'll never change. These are Kaliyajana's tricks. Why is he insisting that in the play the role of Dushasan when there are better roles? Can't you understand this simple thing? Sakuna said, while giving some oblique hints with his eyes, "I don't get you." Bidai Sahu said, "It is tit for tat. It is tit for tat. Do you understand? Sali, like a chaste Sita, she had driven away Kaliyajana as if he was a dog. It is now his turn. He will make undress on her on the stage. Ha ha ha." It is so. Is it so? Will he really do like this? Bidai Sahu was startled. What do you think? Has he hired her at such a high price only to play a role? What will happen? I am baffled. Nothing. No one can blame Kaliya. He he. Kaliya is Dushasan and this woman is Draupadi. No one can complain if he undresses her or does something else. The drama will be successful. Bidai was at heart. If arrows had pierced him, he felt uneasy and worried. He said defiantly, "No, never. It is sheer injustice. Drama means acting, not reality. Does that woman know that the monster has such an evil intention? No, no, no. It is not right." This time Sakuna pitch was higher. "Hey Bidai, have you fed up with life? Will you tell Kaliyajana what is just and what is not? Let it be. We are ordinary people leading simple lives. Why should we bother for big things? We will be satisfied with only a glimpse of our nudity. What business it is of ours to bother about what he does? There will be great fun this time." Bidai was not convinced. He wanted to know if Master Bhishma and Durya Acharya were aware of it. What can they do even if they knew? Who does not love his life? Kaliya says he will kill people as easily as strangle chickens if they try to protest. Everyone is mortally afraid of him. Kaliya's terrible roaring brought silence. Bhishma looked at Durya Acharya, the violinist, who looked at the dumb player Kanuabastya, and Kanuabastya gazed at the florist Jairatha. They were helpless. The rehearsal hall was filled with an unprecedented silence. They were worried about how to tame the wild buffalo to act in the drama. They were more about the unpleasant scenes Kaliya was likely to create. The prompter Duryodhana Mahanti said, "Don't worry, I will manage the situation." The light operator also consoled them, adding, "There will be nothing, don't worry. But Kaliyajana came for the rehearsal with his gang and when he desired. He sat moving his eyes like a god of death. The prompter Duryodhana Mahanti would stand beside him in all humility and say, "Here is your dialogue, please carry on. Come Panchali, your 5 husbands being defeated in a game of dice are sitting downcast in the meeting of Kurus. Come, ha ha ha." It was the dialogue of Kaliyajana. But Kaliyajana joined him in his roars of laughter. When leaving the hall, he uttered some abuses. Bhishma Senapati sighed again and breathed
his face in his hands. He visualized that the scenes of stage that looked like a golden island, a helpless woman on the golden island looking like a golden idol with hands raised and crying for help. Countless heroes and warriors had run into stone at a little distance. Kalyajana, like a monster, entered the island. He ravished the helpless woman who kept crying, "Save me, save me." Ah, Bhishma could not think any further. In frustration, he looked down and prayed, "O Lord, it is your play, make it success." Defying all fears and apprehensions, Ranu Mishra reached Pritipur in the morning on the appointed day. Appointed day means the drama day. Although her eyes were big black, her eyes under big black round goggles were not visible. They seemed to be proud and sharp. She was carrying an airbag. The sky blue sari suited her fair complexion, which was like lightning against the sky. When a dazzling crowd was a dazzling crown on his, but Kalyajana, with a dazzling crown on his head and a string of gems around his neck, diamond earrings and gold armlets, Kalyajana an embodiment royal clothes resembled a dreadful monster. He walked like a tiger in the costume of prince. His movement showed defiance. He gave a monstrous look at Ranu Mishra while walking about the green room. She was wrapping herself in Draupadi's costumes. Kalyajana's lustful look seemed familiar. Kalyajana cast his fake mustache and smiled. Ranu Mishra did not react. Master Bhishma came close to Kalyajana and said, "Look here, playing Dushasan is not easy. Have you memorized the dialogues?" Kalyajana laughed again and, avoiding the question, advanced 2 steps. A sea of spectators were there. The gathering was more than any year in the past, a crowd everywhere in the tent and outside. It seemed as if the sea was disturbed by high tide. The meeting ground was filled with the chattering of excited crowd. They were waiting for the game of dice in which the Pandavas would wager Draupadi. Then Kalyajana, in the costume of Dushasan, would appear. The spectators waited eagerly to see how Kalyajana would drag Draupadi by her hair and undress her. The bell rang, the concert started, the music set the tone for the prologue. The audience was stunned hearing the boisterous laughter of Sakuni. The game of dice began. Duryodhana Mahanti was the moving in the wings with a torch. He was the prompter. It was a very critical time for him as his caliber as a prompter would be tested at that night. The light operator Salwa was also in the readiness. It was time for him to create magic on the stage. Master Bhishma prayed to God with folded hands. "Oh my God, the director of all dramas, you are the creator of and player of the games. Lord, end today's game well. This is the final test of my life. O God, merciful, manifest thyself to save me." At last, the much awaited moment arrived. The Pandavas, defeated by the sitting of their opponents, sat with their faces buried in their hands. Dushasan went to face Draupadi at the behest of the boastful Duryodhana. The stage was dimly lit. In illusion of the meeting of the Kauravas was created on the backdrop. A very pathetic strain of the violin made the situation grave. Just at the moment, a woman's repeated cry for help was heard from the background. The audience was stunned. The restless crowd seemed calm and still. The woeful cry, "Save me, save me, save me," stirred the hall. It was the voice of Ranu Mishra who was playing the role of Draupadi. Kalyajana came on the stage, dragging the woman by her hair. Ranu Mishra, with folded hands, went on saying, "A cause of your meanness. I am, after all, a human being. Who authorized you to handle me like a commodity?" Duryodhana, the prompter, moved up and down behind the wings. Kalyajana had to deliver his dialogue. "Ha ha ha," Kalyajana laughed. Had he forgotten his dialogue? Kalyajana remembered how he had been insulted by her in the past. He had gone to Ranu Mishra to hire her for one night
to share his bed at his fabulous price. She threatened to strangle him and had driven him away. Today he wanted to avenge it. He thought he thought to disturbing her fully in front of all. Ha ha ha. Kalyajana wrote in laughter, in furor and hatred. Duryodhana Mahanti prompted, call your 5 beloved husbands. They have lost the match and are going to. Kalyajana laughed again, overlooking the prompter, and said, holding Ranu's sari in one hand, bloody war, you will sleep with thousands of people and yet reject me. How dare you? Bhishma was confounded. Joyratha stopped playing. Duryodhana Mahanti could not understand Kalyajana's ramblings. Ranu Mishra, dressed as Draupadi, was also startled. Kalyajana thundered, Sari, I will see who rescues you. I will chop up anyone who comes to the stage. Save me, Ranu Mishra screamed. Here is such a large crowd, helplessly I call, someone save me from this monster. She went on woefully. There was not even a ripple in the crowd. All the great warriors sitting on the stage were still and silent. Ranu Mishra ran from one corner to the other like a frightened doe. Where could she go? She is between the fire and the hunter's net. Kalyajana adds, a group of lustful young men were alert all their sides. The stage turned dark all of a sudden. There was darkness all around. It was perhaps power failure. Amidst the darkness, Ranu Mishra's last cry became more pathetic. She cried out, someone from you, save me, save me, save me. Kalyajana aides, who did not want to deprive Kalyajana of his revenge, had perhaps apprehended something like to happen. They knew that the old Bhishma master, along with his followers, would do something. Therefore, they had kept themselves ready with powerful torches. As the light went out, they cried collectively, Kaliya bhai, you carry on. We are lighting the stage. They kept their torches focused on it. The light seemed to dance like the moon on the tides of the sea. The surface of the tides looked like glittering silver, whereas the throats looked black. It was a game of hide and seek between light and shade, and there was an unprecedented scene. Helpless Ranu Mishra stood at the center of the stage with her eyes closed and hands raised in fear. Kalyajana, with all his might, was tugging her sari. He laughed like a monster. Let the public see her nudity. Let the public see her nudity. Ha ha ha. Let the public see your naked body. Bhishma Senapati was wailing, oh merciful God. The flute was silent. The violin lay pitiably. The aides of Kalyajana were openly challenging everyone. We will wring the necks of those who oppose to stop Kaliya bhai. We will cut your throat if you drop the curtain. Be careful and be warned. Without any thought or reaction, Ranu Mishra closed her eyes with her hands raised. Behold, free of cost. Behold, pierced corp, yell. Behold, Sali's naked beauty. Having announced this, Kalyajana pulled the last layer of her sari. Just that moment, a snow-white sari fell on Ranu Mishra and covered fully her. Who is that bloody fellow? Kalyajana wrote. Another sari fell on her. I'll chop him into pieces. I tell you not to give any clothes on her. I will kill you. Then fell another, another. Blue, red, green saris, one after another came flying from darkness and fell on Draupadi. Kalyajana shouted, stop, I'll tell you, perhaps you don't know me. I will kill everyone and set fire at Pritipur. Who the hell you are? Stop giving saris to this woman. The more he shouted, the more saris fell on Ranu Mishra. It seemed as if Lord Krishna himself was sending thousands of saris to preserve the honor of Draupadi. When Ranu Mishra was covered under the heap, Kalyajana wrote for the last time, who are you? Speak the truth. Who are you? The light came on just at the time. The entire ground was flooded with it.
Turning back, Kalyadana looked below the stage. He was stunned to see his aunts, his sisters, and all of the women of his villages standing half naked, throwing their saris on Ranu Mishra. His feet trembled and became unstable. Something grated vigorously on his chest when he saw his 90-year-old mother standing fully naked before him with stoic indifference. She had been the first to throw her white sari on Ranu Mishra. Kalyajana fell on his knees and stopped like a small child. Thank you. Thank you, Mr. Ray. Next short story reader is Mr. Bharat Balan. Bharati Balan. Bharati Balan. Okay. Namaste, Vanakkam, respected chair, dear fellow writers, respected Sahitya Academy Executive Committee member, Professor Damodaran Ji sir, dear audience. This is the story titled Uyirchuli, in English, Whirlpool. This is a story of the loyalty and gratitude of the peasant towards his ex-master. The nostalgic memories about the native villages and their whereabouts, the contribution of his masters for the rural development and the individual attention paid by him affected the peasant very much. His desire of owing something for him in return. This is the story outline. Now I read my story in my own language. It will be circulated English version very soon. Uyirchuli. பெருமாள் சாமியாடா அது? அட, ஆளே அடையாளம் தெரியலையே, என்ன சோழியா வந்தாப்ல? அவன் முகம் மலர்ந்தது. பயண களைப்பு மறைந்து மனதில் மகிழ்ச்சி மிதந்தது. ராசு செட்டியாரை இந்த ஊரில் வைத்து, அதுவும் இப்படி தெருவில் வைத்து பார்ப்போம் என்று நினைக்கவே இல்லை. அவரே அடையாளம் கண்டு பேசுகிறார். அவனுக்கு மன கிளர்ச்சி ஆயிட்டு. என்ன ஜோலி, வித நெல்லு வாங்கலாம்னு வந்தேன்டா. இப்போ வந்தா கிடைக்குமா? சொன்னாங்க, சரி போய் பார்க்கலாம்னு வந்தேன். யார் சொன்னா? நம்ம கொசப்பாளையத்தில் இருக்கிறாப்லைய சின்னராஜு மவன். ஓ அவனாடா, இது என்னையா கேள்வி? எங்கே ஓடிட்டான்ல கேள்விப்பட்டேன். ஊரில் தான் இருக்காப்ல. காப்பி கடை ரத்தனம்பலம் நல்லா இருக்காரா? அவரும் நொடிச்சிட்டாரு. உங்கள் சின்ன மக்கா பெரிய மக்கா? இருக்காங்க. Mr. Bharat Balan, you can read in English only because no one is understanding. I translate my verse. You can read that only. No. Please read in Tamil. Okay. There is an audience. Okay. One minute. Okay. 1 minute. If he is there, you read. Okay. I thought no one is there, but when you are there, let him. People can... Please go ahead. Please go ahead, I told. உங்களுக்கு வியாபாரம் எப்படி? வியாபாரமா? அதான் நடிச்சு போச்சே. 3-4 லோடு பணம் நின்றுச்சு. இப்போ மண்டியில் கூலி ஆளாக இருக்கேன். கூலி ஆளா? நம்ம உத்துவாத்தியார் மகன் கூட மெட்ராஸில் தான் லோடு அனுப்புகிறாப்லையாம். அதான் சொன்னேன்ல, நாய் பேயெல்லாம் வியாபாரத்துக்கு வந்துருச்சு. பின்ன என்ன விளங்கும்? ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும்பா. சம்சாரிங்க பொழப்பே ஆத்த மாட்டாப்புல தான். சரி வா, ஒரு வாய் காப்பி குடிக்கலாம். வேண்டாம் ஐயா, இப்போ தான் குடித்தேன். எங்கே குடித்த? தேர் முட்டிக்கிட்ட நம்ம பிச்சைப்பைய கடை வச்சிருக்கான், அவன் வாங்கி கொடுத்தான். ஓஹோ, நெல்லு தானடா இன்னமும்? பின்ன எலே, வாழகையில போடப்படாதா? நீயும் 4 காசு பார்க்க வேண்டாமா? நெல்லை போட்டு என்னத்தடா கண்ட? அம்புட்டு காசுக்கு எங்கடா போகட்டும்யா? போட்டாலும் பலன் கிடைக்கும். சரி, ஒரு காணி எங்கேயாவது வித நெல் வாங்கி தர முடியான்னு பாருங்க ஐயா. இப்போ போய் கேட்டா எவன்டா வச்சிருப்பான்? வச்சிருந்தாலும் தருவாங்களா? சரி பாருங்க. எங்கே போய் பார்க்கறது?
பசுக்காரனுக்கு தண்டம் போட்டுட்டு இவ்வளவு தொலைவெட்டில் வந்திருக்கியே, அங்கனக்குள்ளேயே எங்கேயாவது வாங்கியிருக்க வேண்டியதாண்டா. கிடைக்கலன்னு தான் வந்தேன். தூரத்தில் ஒரு பஸ் வந்தது. அது எழுப்பிய ஒளியை விட புழுதிதான் அதிகம். பஸ் உருவமே தெரியவில்லை. சுருள் சுருளாய் புழுதிதான் எழும்பிற்று. என்ன எப்படி வர்றான் பாரு, ஆளை கள்ளி போடுவான் போல தெரியுதே. செய்வான், கேட்கறதுக்கு இங்கே யார் இருக்கா? ஒரு தார் ரோடு போடுங்கடான்னா சொல்ல ஒரு நாதி உண்டா? நம்ம ஊர்னா விடுவோமா? நீங்கள் இப்படித்தான் இருக்கிறீங்களோ, என்னடா செய்கிறது? இந்த காணியும் போச்சு. உன் வயலுக்கு கலக்கால மேல்மடையில் தான் என் காணி. தெரியும் தெரியும். இன்னைக்கு வேலைக்கு எம்பிட்டு போகும்? செண்டு 2000. பின்ன பேசுகிறவன் உங்கள் கெட்ட நேரம். எல்லாம் தொலைச்சி போட்டு இப்படி வந்து கிடக்கேன். ஊர் செம்ம வந்து ஏதாவது சோழி தொந்தரவு பார்க்கலாமே ஐயா. வாங்களேன். துட்டங்க விட்டுட்டு அங்கே வந்து என்னடா செய்கிறது? அதுக்காக இப்படியா புழுங்கிட்டு சாகிறது? என்னம்மா பொழப்பு பொழைச்சிட்டு இப்போ ஒன்றும் இல்லாமல் வந்து நின்னா ஊரில் துப்ப மாட்டாங்களா? ஒரு சமயம் போல் ஒரு சமயம் இருக்குமா? சரி, போகிற சோழியை பாரு. ஒரு காப்பி தண்ணி குடிடான்னா வேண்டாங்கிற. இப்போ தான் ஐயா குடித்தேன். சரி, விசாரிச்சுட்டு பார்த்துட்டு வா. அதோ அந்த தண்டி கம்பி தெரியுது பாரு, அங்கே தான் வாழ மண்டி. சரிங்கய்யா. பெருமாள் சாமி திரும்பினான். ராசு செட்டியார் சொன்ன இடத்தில் அவனால் சட்டென்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அந்த இடத்தில் மட்டும் தெருவிளக்கு எரியவில்லை. இருட்டு, அரைவட்டமாக இருட்டு படுத்து கிடந்தது. ஒரு பெரிய யானை மாதிரி அது இருந்தது. வாழை மண்டி சிறு சந்துக்குள் இருந்தது. சந்து முழுவதும் இருள் நீண்டிருந்தது. வழியில் 2-3 உருவங்கள் காலை அகட்டி கையை பரத்தி படுத்து கிடந்தன. நல்ல தூக்கம். ஜாக்கிரதையாக நடந்தான். தூரத்தில் பட்டக சாலை மாதிரி ஒரு இடம், ரொம்ப விசாலமான இடம். அங்கு மட்டும் ஒரு விளக்கு, 60 வாட்ஸ் ஒளியிலிருந்து நூலாம்படை சுற்றி கிடந்தது. ஒரு பக்கம் வரிசையாக வாழைத்தார், அடுத்த பக்கம் வேறு சில தட்டுமுட்டு சாமான்கள். அடாடாட வாப்பா, எங்க தூங்கிட்டேயோன்னு பார்த்தேன். அந்த தூக்கமெல்லாம் போய் எவ்வளவோ நாளாச்சுப்பா. இப்போ எல்லாம் ஆத்த மாட்டாப்புல. இப்படித்தான் கச்சத்தாரி ஏலம் முடிஞ்சது. அப்படியே தலையை சாய்ச்சேன். சிரமப்படுத்திட்டனோ? இலைய நீயும் ஒருத்தன். சரி, போன காரியம் என்னாச்சு? அந்த இந்தாண்டு 2 மைல் தூரம் உள்ளே போகும்படி ஆயிடுச்சு. ஒரு இடத்துல இருக்கு. போன நேரம் விளக்கு வச்சுட்டான். காலம்பர வான் இருக்கான். ஓ, என்ன விளையாடா சொல்கிறான்? அதை கூட சொல்லலை. காலையில் வான்ட்டான். சரி, சாப்பிட்டியா? 2 புரோட்டாவை வாங்கி அந்த இடத்துல வாயில் போட்டேன். இலே மோசம்டா, இங்கெல்லாம் புரோட்டா வாங்கி சாப்பிடக்கூடாதுடா. சால்னாவில் ஆட்டுக்கறியதையும் போடுறானா கண்ட, அதான் வயிற்ற புரட்டுது. சரி சரி. செட்டியார் எழுந்து வெளியே போனார். காய்ந்து சருகான வாழை இலைகளையெல்லாம் அள்ளி கொண்டு வந்து போட்டார். அதை கையால் தட்டி தட்டி மெத்தை மாதிரி பண்ணிவிட்டார். அதன் மேல் ஒரு பாய், கிழிந்த கோரைப்பாய், 2 தலையணைகள், அழுக்கேறி போன தலையணைகள். அதன் மேல் ஒரு துண்டை விரித்தார். எதுக்கு இதெல்லாம்? படுடா, சுகமா படு. பெருமாள் சாமிக்கு ஆச்சரியம், தாங்க முடியாத ஆச்சரியம். அந்த ஆச்சரியத்தில் ஆடி போனான். பேச வாய் எழவில்லை. உதடு துடித்தது. ராசு செட்டியாருக்கு படுக்கை போட்ட குடும்பம்தான் இவர்களுடைய குடும்பம். சித்தப்பு சிவசுவும் மாயாண்டியும் அவர் காலடியிலே தான் கிடந்தார்கள். மாலை வேளைகளில் ராசு செட்டியார் ரத்தனம்பிள்ளை காப்பி கடையில் தான் வந்து உட்காருவார். கடை வாசலில் அவருக்கென்று தனி நாற்காலி. ஊரில் அவருக்கு நல்ல கௌரவம். 7-8 செய் நிலம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு கூட இல்லாத இந்த கௌரவம் அவருக்கு உண்டு. சர்க்கார் உத்தியோகம் பார்ப்பவர்களுக்கு கூட இந்த கௌரவம் கிடையாது. ராசு செட்டியாரிடம் காசு பணம் அதிகம் இல்லை, காணி நிலம்தான். ஆனால் கண்ணியம் நிறைய இருந்தது. ஊரில் எல்லோரிடமும் ஒரே மாதிரி பழகுவார். வடக்கு தெரு ஆட்கள், தெற்கு தெரு ஆட்கள் என்று பிரித்து பழகவே மாட்டார். இதன் பொருட்டு அவருக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்தது. விவசாயம்தான் அவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை. 4-5 வருஷமாகவே விவசாயம் விழுந்து விட்டது. உழுது உழுது உரமிட்டதுதான் மிச்சம். அதை விலைக்கு வியாபாரத்துக்கு வந்தார். வியாபாரம் அவரை சுட்டு விட்டது. சட்டென்று மார்பில் பாய்ந்து அவரை பிளந்து போட்டு விட்டது. இப்படி எதுக்கு இருக்கணும்? பேசாம வாங்க ஊருக்கு என் கூட. செட்டியார் பதில் பேசவில்லை. எங்கோ பார்த்தார். பார்வை தத்தளித்தது. கண்கள் குளம் கட்டி கொண்டன. இதை மறைக்க அவர் சிரமப்பட்டார். பெருமாள் சாமிக்கு நாக்கில் முள் குத்திற்று. ஏண்டா கேட்டோம் என்று வருத்தம். அதை மறைக்க பேச்சை எங்கேயோ திருப்பினார். செட்டியார் திரும்பவில்லை. திருதிருவென்று பார்வை பளிங்கி போல் ஆயிற்று. இருட்டில் அவர் முகம் மேலும் இருளாயிற்று. சின்ன வண்டி மவன் தாண்டா என்னை இந்த தொந்தரவு கொடுத்துட்டான். கூட்டா வியாபாரம் பண்ணலாம்னு இழுத்து பள்ளத்தில் தள்ளி விட்டான். சும்மா சொன்னா தெரிஞ்ச தொழிலை வெட்டவனும் கேட்டான், தெரியாத தொழிலை தொட்டவனும் கேட்டான்னு.
சரி பேசி என்ன ஆக போகுதுங்கய்யா? பணம் போனது சொல்லலடா, கழுத போகுது. இப்படி ஒட்டு உறவு இல்லாமல் இப்படி அனாதையாக கிடக்கிறனே. அவனை நம்பி நீங்கள் இறங்கியிருக்க கூடாது. அதில் தான்டா முழுசாக ஒரு நோட்டை விட்டு போட்டேன். விடுங்க. குடும்பம் அவளுக்கு என் பேரில் சடவு. வியாபாரம் வியாபாரம்னு துட்டை விட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு மகன் கூட வடநாட்டு பக்கம் போயிட்டா. ஓ சரி, போய் அவங்களாவது சுகமாக இருக்கிறாங்களே. போடா போ, ஊர் பேர் தெரியாத இடத்துல போய் இருந்து எதுக்குடா? சரி அப்படியெல்லாம் பேச வேண்டாம். ஏலே நம்ம கையிலியாடா இருக்கு? அதான் வேண்டாங்கிறேன். ஒன்று சொல்லட்டுமாடா, இப்போல்லாம் அடிக்கடி நெஞ்சை வந்து கப்பு கப்புன்னு அடைக்குதுடா. ஆள் பேர் இல்லாத இடத்துல எங்கே மண்டையை போட்டுருவோமோன்னு தாண்டா வருது. உங்கள் வாயில் என்ன இப்படி வார்த்தையாக வருது? செட்டியார் உதட்டில் ஒரு புன்னகை ஓடிற்று. வறட்சி புன்னகை, துக்கத்தை முழுவதும் முறுவல் காட்டுகின்ற புன்னகை. 65 வருஷமாக வேர்வெற்றிருந்த மண்ணிலிருந்து விலகிவிட்டோமோ என்ற வருத்தத்தில் வடிகிற புன்னகை. தூங்குடா. பாவம் ஒன்றை வேற கஷ்டப்படுத்திட்டேன். அதெல்லாம் இல்லை, சரி தூங்கு. பெருமாள் சாமிக்கு இயல்பாக இருக்க முடியவில்லை. சட்டென்று காலை அகட்டி கைகளை தளர்த்தி உடலை சரிக்க முடியவில்லை. தயக்கம். செட்டியார் சட்டென்று சொல்லிவிட்டார். அவன் இப்படி நினைக்கவில்லை. எங்கோ ஒரு இடத்தை காட்டி படு என்று சொல்வார் என்றுதான் நினைத்தான். பக்கத்திலே படுக்கை போட்டார். அவர் மனசு அப்படித்தான். என்றாலும் இவன் வம்சம் அப்படி வளரவில்லை. பெருமாள் சாமியின் அப்பா பெரிய சுப்புவெல்லாம் செட்டியாரை பார்த்ததும் தோல் துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டி கொள்வார். அப்போது செட்டியாருக்கு சின்ன வயதுதான். இருந்தாலும் ஊர் வழக்கம் அது. பெருமாள் சாமி தலையெடுக்கவும் அந்த வழக்கம் குறைந்து கொண்டே வந்தது. ஆனாலும் அந்த ஏற்ற இரக்கம் மறையவில்லை. ராசு செட்டியாரின் பார்வை தெளிவுதான், எப்போதும் தெளிவுதான். இரக்கத்தில் இருப்பவனை அவர் ஒருபோதும் இலக்காரமாக பார்த்ததே இல்லை. அவர் சுபாவம் அப்படி. பெருமாள் சாமியின் மனதில் அது இன்னும் ஆடிக்கொண்டே கிடக்கிறது. இப்போதெல்லாம் ஊரில் அடிக்கடி பஞ்சம் பட்டினி வந்துவிடும். குடிக்கிற கஞ்சிக்கும் உடுத்துகிற துணிக்கும் திண்டாட்டமாகிவிடும். அடிக்கடி அந்த குடும்பம் நொடித்து விடும். அப்படி விழுகிற போதெல்லாம் செட்டியார் வீட்டு வாசலில் தான் போய் நிற்பார்கள். வாசலில் போய் கைகட்டி நிற்பார்கள். அப்பொழுது பெருமாள் சாமிக்கு சின்ன வயது. அவனும் கூட போய் இருக்கிறான். வாசலில் போய் கைகட்டி கொண்டு அப்படியே நின்று கொண்டிருப்பார்கள். செட்டியார் தலை தெரிந்ததும் சடார் என்று விழுந்து எழுவார்கள். செட்டியார் என்ன எதற்கு என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டார். உடனே வீட்டிற்குள் போய் 10 நிமிடம் கழித்து திரும்புவார். ஒரு மரக்கால் நெல்லும் மல்லு வேஷ்டியும் கூட வரும். பழுப்பு நிறத்தில் அந்த மல்லு வேஷ்டி இருக்கும். அதை கைப்பட்டு விடாமல் தாள விரித்து வாங்கும்போது பரவசமும் படபடப்புமாக இருக்கும். தன்னை மீறி வாய் உளரும். ஐயாக்காமார் நல்லா இருக்கணும், ஐயாக்காமார் நல்லா இருக்கணும் என்று வாய் உளரும். அரட்டிக்கொண்டே இருக்கும். அகல விரித்து கன்னத்து சதை கண்டுகண்டாய் துடிக்கும். நெஞ்சத்தை பார்க்க என்னவோ போல் இருக்கும். பெருமாள் சாமிக்கு இன்னும் அந்த காட்சி மனதில் தேங்கி கிடக்கிறது. சின்ன சின்ன நினைவுகள் நெஞ்சை ஈரம் படர்கிறது. உடம்பு படபடக்கிறது. கால் வடவடவென்று ஆடுகிறது. கண்ணும் மனசும் துள்ளி விழுகிறது. கால ஓட்டத்தில் மாறுகிற காட்சி கண்ணையும் மனசையும் மிளறச் செய்கிறது. இந்த நிஜத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு மனசு மட்டுப்பட சில கணம் தாண்டிற்று. ராசு செட்டியார் தூங்கி போனார். தோய்த்து கிழிந்து காவேரியில் போன வேஷ்டியை அவிழ்த்து கழுத்து வரை போர்த்தி படுத்திருந்தார். அவரை கண்வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான். இருள் மூடி கிடந்தது. அமைதி. மனம் விழித்து கொண்டது. அவன் கண்களில் பெருக்கெடுத்து கொண்டது. அந்த வாக்கில் செட்டியாரை கட்டி பிடித்து கொள்ள வேண்டும் போல் மனதில் ஒரு பேரொளி உண்டாயிற்று. தன் தகப்பன் விழுந்த போதெல்லாம் மரக்கால் நெல்லும் மல்லு வேஷ்டியும் கொடுத்து தூக்கி நிறுத்திய அந்த கைகளை வாரி எடுத்து தன் நெஞ்சுக்குள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வெறி. அவனால் முடியவில்லை. அவரை அப்படி அள்ளி பருகுவது போல பார்த்து கொண்டே இருந்தான். இருள் மேலும் கூடிக்கொண்டே போனது. அழுக்கேறிய அவருடைய வேஷ்டியையும் நைந்த உடம்பையும் மனசில் பார்க்க என்னவோ போல் அவனுக்கு இருந்தது. துக்கம் பிடிக்கவில்லை. இருள் நகண்டு மத்தியத்திற்கு தாவிற்று. மீதி பொழுது தூக்கமும் விழிப்புமாக நடந்தது. பெருமாள் சாமி சட்டென்று எழுந்தான். மடியில் கட்டியிருந்த பணத்தை எடுத்து எண்ணினான். விதை நெல் வாங்க வைத்திருந்த பணம் 300 சொச்சம் இருந்தது. விதை நெல் வாங்க கொண்டு வந்த பணம்தான் என்றாலும் விடிந்ததும் செட்டியாருக்கு ஒரு வேஷ்டி எடுக்க வேண்டும் என்று மனதிலே நினைத்தான். மல்லு வேஷ்டி வேண்டாம், 8 முழ வேஷ்டி எடுக்க வேண்டும். இரட்டை கரை போட்ட பாலியஸ்டர் வேஷ்டி எடுக்க வேண்டும். அவன் கைகளை தொட்டு கொடுக்க வேண்டும். அவர் கைகளை தொட்டு கொடுக்க வேண்டும். அவர் வாங்க மறுப்பார். வம்பாக கொடுத்து விட வேண்டும். தட்டப்படாது என்று அவர் காலடியிலே சமர்ப்பித்து விட வேண்டும் என்று அவன் மனம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. காலையில்
அப்பொழுதுதான் மனம் நிறைவடையும் என்று நினைத்தான். விதை நெல் வாங்க வைத்திருந்த பணம், கூட்டி பெருக்கி சேர்த்த பணம், பல மாதங்கள் சேர்த்த பணம், ஒரு போகம் நிலம் தரிசாக கிடந்தால் போகிறது, போகட்டுமே. அவர் மனசு நிறைய வேண்டும், பச்சை பசேல் என்று நிறைய வேண்டும். பசை பசும்புல் போல காற்றலை ஓடுவது போல அவர் கண்ணத்து சதை மலர்ச்சியும் இடமும் வளவுமாக ஓட வேண்டும். அதை பார்த்தாலே போதும். பெருமாள் சாமியின் மனம் சமாதானம் அடைந்தது. நன்றி. As there is a constraint of time, straightway I want to first read my short story, then say a few words about the short stories of the co-participants here. The title of the short story is Grains of Wrath, originally in Kannada as Jolada Butti Olaginda, translated by Professor Parimala Naik. Grains of Wrath. In those days, there were no electric floor mills. All mills ran on diesel power. So also in our village Govinad, our Krishnappa ran a mill. As soon as he started it, the village was alerted by the chuck, 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 chuck sound it emitted. He had fixed a small tin on top of the chimney. The tin bet against the edge of the chimney and made a rhythmic sound. Only when people came near the mill did they hear the slapping sound of the belt against the motor. There were only two such mills in the village. One in the upper caste lane, run by Chinnappa, and the other in the lower caste lane, run by our Krishnappa. Once a week, on market day, there was an endless queue of baskets of jawar outside the mill. People put down their baskets and waited their turn in small groups under the trees, talking 19 to the dozen. To the left of the mill, about 10 or 12 houses away, was Kashappa's house. He had married late in life, this Kashappa. He had a brother, Dyamanna, who was about 10 years younger. Kashappa had an elder sister, Ramava, who had two daughters, Bhadrava and Dhyamava. She had insisted that both her brothers marry her two daughters. Kashappa and Dyamanna had no choice but to agree. So they had married the girls. The younger brother and the younger girl were well suited. But with Kashappa and Bhadrava, there was a considerable difference in age. She was almost 18 years younger than he was. Yet they had adjusted quite well together. Occasionally, Bhadrava was subjected to the sly remarks of the villagers. She had to bear being called the old man's tall, well-built, light-complexioned, straight-nosed, full-breasted, and attractive woman. Her sister Dyamava was more or less like her, and the people who saw them together were impressed by their good looks. The four of them lived together and tended their 2 hectares of land. In addition, they had leased 2 hectares of land adjoining their own and made a comfortable living themselves. Ramava, the girl's mother, who was also their husband's sister, hardly went out of the house. She was a large, heavy woman and needed 2 people's space to sit. Once she sat down, she had difficulty getting up without help.
She had long curly hair which she tied in a huge bun. She had a broad forehead and fat arms on which she wore 2 pairs of gold bangles. She was mostly housebound, but this day she had ventured out to Sekrappa's house. Sekrappa was a distant relative on her mother's side and called her as Akka, that is, elder sister. He ran a successful granary. She sat before him and started sobbing. Look, brother, I don't know how to tell you this. It is a very delicate matter, but I can't let it go because tomorrow, if word gets around, you might accuse me of not informing you first. I just don't know what to do. It was obvious that she was under great strain. Sekrappa tried to calm her. Sister, why do you worry so much? Get a hold of your feelings. Be brave and tell me everything. Am I not here to support you? Slowly she stopped crying and said, how can I tell you? It is very shameful. I feel dirty bringing such words to my tongue, but it is a matter of my daughter's honor. She fell silent. Sekrappa was agitated and asked, what? What has happened? To mitigate our honor, stop crying and tell me clearly. He ordered her. Ramava stopped crying. She saw that he would get angry if she delayed matters anymore. Last week, so Ramava started telling, last week my daughters Bhadrava and Damama went to the flour mill with Jawar. At that time, Balappa of the corner house was sitting on the steps of the mill and passed sly remarks at them. He usually does this, but nobody bothers with him. Yet last week, he addressed Bhadrava directly and said she was an old man's wife. He said it was funny that a young bullock was harnessed to an old cart. If the bullock runs full stream, the old cart cannot keep up. If the bullock slows down to keep pace with the cart, it will never get tired. Someone needs to work the bullock. Yes, someone must get it tired. This is what wretched Balappa said as he walked by Bhadrava, deliberately bumping against her arm. Bhadrava was angry and humiliated and told me of the incident. She could not even eat properly. She could not tell her husband because she was afraid there would be a violent encounter between the men. I have therefore come to you, Sekrappa, for counsel, Ramava begged. Ramava knew her brothers were good men and not aggressive. She knew that even if she told them, they would not take any action against Balappa. If Balappa continued to take liberties, people would start gossiping and she would lose face in the village. Everyone knew that a rascal Balappa was. So no one would stand up against him and would target her instead. She had guessed right because Sekrappa, after hearing her out, asked, I can understand. It is a very shameful matter. I can't stand such goings on at all. But tell me one thing, Ramaka, that is Ramava. For Balappa to take such liberties, did your daughter give any encouragement to him? Is your daughter interested in a liaison with him? The question was direct enough and Ramava was taken aback. She was confident about her daughter's virtues, but the difference in age between Bhadrava and Kashappa, and now how the people remarked about it, reminded her of this possibility
and she broke into a sweat. But she recovered immediately and protested, "No, no, no, not at all. My daughters are too good for the likes of Balappa. It is Balappa who is a rascal and he must be taught a lesson." And she raged on. Shekrappa stopped her and said, "Okay, Ramava, okay. Look, I have a plan. If you are so confident about your daughters, here is what they have to do. Tell them to go to the flour mill this evening." And he whispered his plan into her ear. She listened carefully as if it was a divine message. When she had heard the complete plan, she felt a shiver run down her spine. She knew of Shekrappa's power, and if she did not do so as he ordered, she would be as severely punished as Giriyappa and Hanumama had been last year. She humbly agreed to whatever he, that is Shekrappa, said. She then took his leave and saying, "You are like a father to these children. When they have you, you have the strength of an elephant to support them. Why should they be scared? Whatever is to take place, let it be so." He nodded at her to leave and she hurried home. When she reached home, she signaled for her daughters to follow her to the room in the backyard and hurried there herself. Curious and anxious, the daughters soon followed her. They wondered what was going to happen next. The small children tried to follow them and overhear what the women were saying, but Ramama shooed them away. Never had the children heard Ramama being so harsh, and they ran away frightened. She called Bhadrava and Dhyamava close to her and related all that had taken place between Shekrappa and herself. They listened to her with bated breath and said, both the girls, I mean that woman, both of them tell us what we have to do, and we will do exactly as you say. If we don't do so, you can slit our throats. We are, after all, your daughters, and we shall never bring shame on our family, even if we have to sacrifice our lives for our honor. To Ramama, they seemed like brave soldiers ready for battle. Seeing Bhadrava's determined face, Ramama felt that perhaps she had done her an injustice by forcing her to marry an older man. But it was too late. She recovered and said slowly, "I had never doubted your integrity or sense of honor, my mother's." Say, Avva, Avva. They call daughters also like Avva. So it is mother here. My mother's, but I don't know how to deal with this, so I had to go to Shekrappa. Now, if we don't do as he has ordered, he will. She was about to continue, but Bhadrava interrupted her and said, "If we are to retain our respect, we have no choice but to follow Uncle Shankarappa's orders. Don't you worry, my mother. After all, we are mortal. Everyone who is born must die. In between birth and death, we must live with honor and dignity. So we shall do everything to protect our dignity." Seeing her daughter turn philosophical at such a young age saddened Ramama. She was glad she had done what she could do to educate them. She felt they were worthy of being called her daughters and stretched out her arms and hugged them. The three women shed silent tears, but were all determined to fight for their rights.
As usual in the evening, the chuck, 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 chuck sound of the floor mill sounded through the village. Hurriedly, the villagers gathered their baskets of java and walked towards the mill. As usual, Balappa in his white dhoti, starched shirt, shining slippers, and with his ring with flashing green stones, took up his position in the mill. His eyes darted as if searching for someone. Just then, Krishnappa also joined him. Balappa was not a bit interested in small talk today. He nodded to Krishnappa mechanically and kept watching the gathering crowd. Yesterday, when he had deliberately bumped against Bhadrava's arm, she had not protested. Was she interested in him? Thinking about her, he felt a bolt of lightning run through his body. He felt he was about to step into a new world. His desire to see her seemed unbearable and unblinking. He stared at the road. Then he saw two sisters. They were walking down the road with baskets of grain balanced on their heads. He trained his eyes on Bhadrava and felt his hair stand on end and his eyes widened. His mind started rapidly calculating his next step, and his heart had already reached cloud 9. He felt an inexpressible joy and waited for them to walk towards him. He crouched down and waited like a hunting cheetah waiting for its prey. Meanwhile, the sisters came forward with sure steps. Balappa, in his eagerness to have the chicken, did not count the eggs. As the sisters neared him, he stood up for the attack and called out loudly, If two hang on to a single basket, how will it stay afloat? It is bound to unravel and sink, torn between the two. Just like a young sapling between a couple of bulls. It is natural to have 1 plus 1 making 2. How can we have 1 plus 2? It is an odd couple, isn't it? He asked this rhetorical question. The sisters knew he was taunting them. Still, they ignored him and proceeded silently. Put the basket of grain down in the queue and stood waiting. This was the moment Balappa was looking forward to. He pretended to get off his perch and stretched his legs. His legs touched Bhadrava's waist. The Amma, as if waiting for this moment, gave a cry of rage, reached into her basket and took out a chappal. She swung it and gave Balappa a resounding slap on his face. Bhadrava too took quick action and did the same. Then, as if all the resentment of the past taunting had welled up with her, she ferociously rained blows and blows on him. This unexpected attack did not give Balappa any time to react, and he covered his face. The people were astonished and started crowding towards the scene of the attack. Meanwhile, someone ran to give the news to Ramava. As if waiting for this signal, she screamed, "Oh, come on, come on!" A crowd gathered behind her as she walked with militant steps towards the floor mill, marching like a commander-in-chief at the head of a charging army on the warpath. Thank you for patient hearing.
Yeah, how much time is there? Yeah, she has come. Another one? Only 2-3 minutes. Yeah. So I will do justice to their reading, just for a short while. So last 3 minutes, uh, the short story form has been in the modern style only 100 and 150 years old. But our storytelling heritage or the history, the background is so long, it goes back to the prehistoric period itself. Ramayana, Mahabharata, all these fables, our rich Ramayana, other classical works. So that is there for us. So the short story today is blooming like anything. So first reader is Dr. Shashikala. She started with Lead Kindly Light of B.M. Sri. So a poem as a prelude to her short story. Finally, she says three things she has described: the sky, the rain or the water, and the earth. So, three elements of the Panchabhutas. The thirst of the earth is finally quenched. Though she has used these things, they are just metaphors for the human craving or human relationship, and she was successful in showing it to us in a very subtle way. Thank you, Shashikala madam. That is, so she has titled it also as Monsoon in the Dark. Now, Dr. Aurobindo Roy, your Odia story is based only on mythology, anyhow, Mahabharata. What was true during those days, so the greed towards property, land, women, maybe it may be Duryodhana, Dushasana at that time, but even today they are still there as they were. He was very explicit in telling them through a drama. In the short story, there is a drama. In the drama, there is a story. So they are all inseparable. Whether it is a poetry, our epics are nothing but long short stories or storage of treasure of short stories. So again, that he made it very clear by making a drama in the story. He gave it a contemporary touch. That is your greatness. So thank you also. Life's whirlpool of Mr. Bharati Balan, I did not understand, but I read a few lines of them. It is good, okay? Keep it up. And when audience are not there who understand our mother tongue, we should read it in English also in the given time framework. I think Mr. Balan would do that in the future. Anyhow, once again, I am grateful to the Academy for having given this opportunity to me and to my co-speakers here and the patient audience. Thank you all, and thanks to Mrs. Bharati. Thank you. Thank you, sir. I'm Miss Bharti, and this was the session of short story reading. आप सबने अभी हमारे उपस्थित सम्मानित मंच को सुना. मनु बालीगर जी का हम धन्यवाद करते हैं इस सेशन की सत्र की अध्यक्षता करने के लिए. शशिकला एच जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. डॉक्टर अरविंदा रे, थैंक यू सो मच. और साथ में भारती बालन जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. नमस्कार देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम इस सत्र से विराम ले रहे हैं. 2:30 बजे से यहाँ पे हमारे तीसरे सत्र का हम शुभारंभ करेंगे. युवा साहिती, राइज ऑफ यंग इंडिया पोएट्स मीट. आप सब ज़रूर पधारें. नमस्कार.
हमारे दो लेखकगण इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि वो जल्दी ही हमारे बीच में होंगे। तब तक हम इस सत्र की आप सबकी सहभागिता के साथ इस सत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, ये जो हमारा सत्र है ये आज हमारा 5वां दिवस है साहित्य उत्सव का, और गोस्वामी तुलसीदास से ये हमारा आज का तीसरा और साथ ही अंतिम सत्र भी रहेगा। सत्र अपने आप में बहुत रोचक है, युवा साहित्य पर आधारित है, राइज ऑफ यंग इंडिया पोएट्स मीट। और आज इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे रफ़ीक मसूदी साहब। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएँ। दिव्य सज्जनों, रफ़ीक मसूदी जी ने हिंदी, कश्मीरी और अंग्रेज़ी में प्रभुत लेखन किया है। आप दूरदर्शन के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक हैं। मसूदी जी की 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आपकी नवीनतम कश्मीरी पुस्तक पनुन डोड पनियंडक का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। आपको अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कला एवं संस्कृति के लिए जम्मू कश्मीर सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त है। आप सबसे पुरानी साहित्यिक सह सांस्कृतिक संस्था अदबी मकरज कामराज के संरक्षक भी हैं। रफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ तमोग्न मुखर्जी को। आई रिक्वेस्ट तमोग्नि टू काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज। ही होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान, वेस्ट बंगाल. He writes poetries and essays in Bengali in general, and his work have been published in esteemed Bengali journals like Anand Bazar, Kritvas, Bak, and many more. 2 of his English poems have appeared in Muse India, and he is also the author of 2 books. आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सब। इसी के साथ मैं सागर नसीर साहब से भी निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएँ। I request Sagar ji also to join us on the stage. Ladies and gentlemen, he is a noted Kashmiri poet, writer and cultural activist. He has published 4 books and compiled and edited around 55 books. Ther Anganech was his debut collection of poems in Kashmiri, which won him Sahitya Akademi Yuva Puraskar. He is a recipient of Youth Achievement Award 2018, Hindi Shiksha Samiti Award and Sabik Memorial Award. He runs his own cultural forum under the banner of Sagar Cultural Forum. सागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम विमला जी को भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमारे बीच नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो जल्दी आएंगी। जगदीप सिद्धू जी से अब हम निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आएँ। आप एक प्रसिद्ध पंजाबी युवा कवि हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में शामिल है जान दे मैनू, एक कविता संग्रह, यूं भी देखन है अगदे रंग, और 2 अनुवाद की कृतियां भी शामिल हैं, और आपको कंवर चौहान स्मृति पुरस्कार भी सम्मानित है। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी ऋषिराज पाठक जी को। देवियों सज्जनों, ऋषिराज पाठक जी, आप एक संस्कृत के प्रख्यात कवि हैं। आप हिंदी और ब्रजभाषा में भी लिखते हैं। आपको युवा साहित्यकार सम्मान तथा संस्कृत में आपके प्रथम कविता संग्रह अद्योन्मेष के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी कृति श्रीमद धाम सिंहाचरितम के लिए आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप शास्त्रीय नृत्यों के लिए भी लेखन करते हैं और साथ ही आपकी रचनाओं का मंचन भारत और विदेश में भी किया गया है। आपकी कविताओं का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किया जा चुका है, और वर्तमान में आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला विश्व महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य हैं। ऋषिराज पाठक जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं। उमर फरहत साहब भी इस समय नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे रफ़ीक सर, आपका स्वागत है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक योर सीट। दिव्य सज्जनों, उमर फरहत जी इस समय हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। ही राइट्स इन उर्दू एंड ही हैज़ 3 बुक्स टू हिज क्रेडिट, निराकार, ज़मीन ज़ाद एंड सरे शके तमन्ना, कि सभी इन्हीं की कृतियां हैं। बिसाइड दिस 4 कंपाइल्ड वर्क आर ऑल्सो टू हिज क्रेडिट. ही इज़ एडिटर ऑफ Tahfeem, a quarterly literary magazine in Urdu, and he has received the Sahitya Akademi Yuva Puraskar as well. We welcome you, sir. और इसी के साथ अब हम रफ़ीक मसूदी साहब से निवेदन करेंगे, इस पूरे सत्र का आप ध्यान रखें, इसकी अध्यक्षता करें। सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों, हम 6-7 जने हैं और समय हमारे पास 1 घंटे का है। क्यों मैम? 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब मेरी ये कमिटमेंट है और मेरा एक सोच है कि शायर को रोका नहीं जाना चाहिए कि समय ख़त्म हो गया, अब आप ख़त्म कर लीजिए। उसको सिर्फ स्पीड ब्रेकर की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही तय कीजिए कि आप 2 पढ़ेंगे या 3 पढ़ेंगे, कि मैम को ना आना पड़े पीछे से कि भैया आप बंद कर लीजिए। तो इससे अच्छा रहेगा कि एक मूल, आप उर्दू में लिखते हैं, आप कश्मीरी में लिखते हैं, आप संस्कृत में लिखते हैं, आप पंजाबी में लिखते हैं, एक मूल पढ़िए और उसका अनुवाद भी अगर हो आपके पास तो वो भी पढ़िए, और उसके बाद जो अनुदित चीज़ हो, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो या किसी भी भारतीय भाषा में हो, वो आप पढ़िएगा। ठीक है? और मैं साहित्य अकेडमी की तरफ से आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने कष्ट किया। यू टुक द ट्रबल ऑल द वे फ्रॉम ऑल द प्लेसेस। ये पंजाब से, ये तो सीधे लाहौर से ही आ रहे हैं, तो ये वहाँ से आए हैं, ये श्रीनगर से आए हैं, यो कम हम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये दिल्ली में मेरे दोस्त, मेरे ख़ास मित्र हैं। आप कहाँ से बेटे? हाँ, राजौरी से। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मेरे जम्मू कश्मीर से हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आपको ज़्यादा कश्मीरी ही ज़्यादा मिलेंगे, और मेरे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त बल्कि जो मेरी कविताओं को जो पंजाबी में अनुदित किया है, डॉक्टर गगन सिद्धू ने, वो सामने बैठे हैं। और मेरी बिटिया जैसी शिष्य हरमन कौर भी है, तो ये भी मेरी कविताओं के ऊपर कुछ काम कर रही है। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे आपकी किताब मिली है, तो ये भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा सुनने की चेष्टा रखता हूँ, मैं ज़्यादा सुनना चाहूँगा आपसे, और अगर समय रहा तो मैं एक आध चीज़ फिर मैं सुना सकता हूँ। तो क्रम यही होगा जो उसमें लिखा होगा, जो आपके पास है। हाँ, आप ये वाला सर ऑन कर लीजिए। हेलो। तो क्रम यही रहेगा कि हम, चूँकि उर्दू किसी भी अवार्ड फंक्शन में आप देखेंगे कि यू है तो उसको अंग्रेजी में, तो लेकिन मैं इसको उर्दू को उर्दू में ही लूँगा। उर्दू का जो पहला लफ्ज़ है अलिफ है, तो मैं अलिफ से ही शुरू करूँगा पहला, कि उर्दू से ही शुरू करता हूँ। आइए। एक ही गुमसुम गुमसुम रहता हूँ, गुमसुम गुमसुम रहता हूँ, खामोशी का सहरा हूँ। गुमसुम गुमसुम रहता हूँ, खामोशी का सहरा हूँ, अपने पीछे चलता हूँ, अपने पीछे चलता हूँ, खुद से आगे निकला हूँ। अपने पीछे चलता हूँ, खुद से आगे निकला हूँ, तेरी तमन्ना तेरी तलब, तेरी तमन्ना तेरी तलब, कहने को मैं अपना हूँ। तेरी तमन्ना तेरी तलब, कहने को मैं अपना हूँ। तुम भी मेरा हिस्सा हो, तुम भी मेरा हिस्सा हो, मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूँ। सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, आवाज़ें देता रहता हूँ। गरज नहीं कुछ दुनिया से, अपने आप में रहता हूँ। फिर से मेरा हाथ पकड़, फिर से मेरा हाथ पकड़, मैं फिर गिरने वाला हूँ। फिर से मेरा हाथ पकड़, मैं फिर गिरने वाला हूँ। एक लास्ट गजल है कि काफिला जब रुका हुआ होगा, काफिला जब रुका हुआ होगा, सारा मंजर थका हुआ होगा, सारा मंजर थका हुआ होगा, बादलों पर कहीं बुलंदी पर, बादलों पर कहीं बुलंदी पर, ख्वाब का घर बना हुआ होगा, ख्वाब का घर बना हुआ होगा, बादलों पर कहीं बुलंदी पर,
ख्वाब का घर बना हुआ होगा। ये जो हर समत खून फैला है, ये जो हर समत खून फैला है, ख्वाब में हादसा हुआ होगा। ये जो हर समत खून फैला है, ख्वाब में हादसा हुआ होगा। बादशाही जिसे मिली होगी, बादशाही जिसे मिली होगी, तेरे दर पर झुका हुआ होगा। शुक्रिया सर। बादशाही जिसे मिली होगी, तेरे दर पर झुका हुआ होगा। जाने वाला गली की नुक्कड़ पर, जाने वाला गली की नुक्कड़ पर मुड़ते मुड़ते रुका हुआ होगा। जाने वाला गली की नुक्कड़ पर मुड़ते मुड़ते रुका हुआ होगा। दिल में मौजूद वो अगर नहीं है, दिल में मौजूद वो अगर नहीं है, धड़कनों में छुपा हुआ होगा। शुक्रिया, शुक्रिया सर। अजीब शख्स था, नक्शे नए बनाता था। अजीब शख्स था, नक्शे नए बनाता था। पुराने तर्ज के ढांचे सभी गिराता था। पुराने तर्ज के ढांचे सभी गिराता था। तलू होते हुए दिन मैं भूल जाता था। तलू होते हुए दिन में भूल जाता था। मैं सारी रात तस्वीर में दिन बनाता था। मैं सारी रात तसव्वुर में, सॉरी, मैं सारी रात तसव्वुर में दिन बनाता था। तलू होते हुए दिन मैं भूल जाता था। मैं सारी रात तसव्वुर में दिन बनाता था। वो कोई और है जिसका ख्याल आता था। वो कोई और है जिसका ख्याल आता था। मैं ऐसे मौके पे उसको भी भूल जाता था। मैं ऐसे मौके पे उसको भी भूल जाता था। मैं दरमियान में बात अपनी करता जाता था। मैं दरमियान में बात अपनी करता जाता था। पुराने किस्से नए कहकर वो सुनाता था। पुराने किस्से नए कहकर वो सुनाता था। वो ख्वाह हिजरत नहीं, मेरे लिए तो वही दश्त और वही सहरा। मेरे लिए तो वही दश्त और वही सहरा। वो दूसरों के लिए रास्ते बनाता था। शुक्रिया। उमर फरहत से मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन शायद ये मुझे जानते हैं क्योंकि इनके इलाके में मैंने काफ़ी काम किया है, ख़ासकर युवा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो कोई तो है जो ये कह गया कि तो ये इलाका जो है इनका, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे टोपोग्राफी या जोग्राफी को नहीं जानते, कि ये इलाका जो है पीर पंचाल एरिया जो है बहुत ही ज़रखेज़ है। चाहे वो डोगरी की हो, चाहे वो गोजरी की हो, चाहे वो पहाड़ी की हो, या चाहे फिर उर्दू की हो, वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी शायराना फसल कटती है। तो इन्होंने एक गज़ल पढ़ी थी तो मुझे याद आया, हमारे बचपने में, आपके बचपने में नहीं क्योंकि अब वो बसें रही नहीं, बसों में शेर हुआ करते थे हमारे कश्मीर में, लिखे रहते थे, और कभी कभी बड़े अच्छे अदबी शेर हुआ करते थे। तो मुझे याद आया कि जाने किन अल्फाज में उस पर बरसना था मुझे, जाने किन अल्फाज में उस पर बरसना था मुझे, सामने जब वो आया तो लफ्ज़ ढूंढा किया। तो ये हमको तब समझ नहीं आती थी, ये तो बड़ा, जब बाद में थोड़ी सी अकल आ गई कि ये तो बहुत ज़बरदस्त अदबी शेर है, इसमें तो बड़ी अदबियत है। बहरहाल अब ये तो हमारे बच्चे जैसे हैं, लेकिन मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, ऋषिराज जी, इनसे भी हमारी मुलाकात यही साहित्य अकादमी, जैसे जननी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको लास्ट ईयर मिला था, तो मैं उसमें था शामिल, तो संस्कृत, और उसके बाद कुछ ऐसा बना कि जब इनका कार्यक्रम होता था मैं वहाँ होता हूँ, जब मेरा कार्यक्रम होता ये होते हैं। तो आज शायद साहित्य अकादमी ने कहा कि नहीं, आप दोनों को एक ही मंच देते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि पढ़िए, इनके ध्यान दीजिए, इनकी जो शब्दावली है, इनकी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स है,
वो बहुत खूबसूरत है। उसके तत्पश्चात जो इनका जो जो हाव भाव होता है वो भी देखने वाला होता है, और उसमें अदबियत भी है, उसमें सौंदर्य भी है, और हसासियत भी है, सब चीजें। ऋषिराज जी। गरिमामय मंच को प्रणाम करता हूं और उपस्थित श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और अपनी कविता शुरू करता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी होली का महोत्सव है। साहित्य उत्सव भी होली जैसी भावना से प्रेरित है, तो एक शास्त्रीय रागबद्ध होली प्रस्तुत कर रहा हूं। शास्त्रीय संगीत में एक राग है काफी, उस राग के आधार पर सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। इह विलसति होली खेला रे, इह विलसति होली खेला रे, इह विलसति होली खेला। ऋतु वसंत कमनीय काल इह, ऋतु वसंत कमनीय काल इह, विलसति होली खेला रे, इह विलसति होली खेला। यहाँ होली का खेल विलास कर रहा है और वसंत ऋतु का यह कमनीय काल है, यह सुंदरतम समय है। सकल कल कलम भवति नर्तनम, सकल कल कलम भवति नर्तनम, जड चेतन कर, जड चेतन कर चलित ताल इह, विलसति होली खेला रे, इह विलसति होली खेला। संपूर्ण सृष्टि में नृत्य हो रहा है, जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, सभी के हाथों में तालियां बजने लगी हैं। विधि हरि हर नव प्रकृति विभ्रमय, विधि हरि हर नव प्रकृति विभ्रमय, शमित हृदय मद भरित चाल इह। जो शांत हृदय है उसमें भी मद भरी चाल आ गई है। क्यों? क्योंकि यह होली की वेला है। और जो परम पुरुष है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसमें कोई बंधन नहीं है, वह भी बंध गया है उत्सव में। वह भाव अगली पंक्तियों में है। बंधन रहित परम पुरुष इह, बंधन रहित परम पुरुष इह, प्रकृति बंधनाद्वलित जाल इह, विलसति होली खेला रे, इह विलसति होली खेला। ऋतु वसंत कमनीय काल इह, विलसति होली खेला। पुष्पों का भी होली उत्सव है, क्योंकि पुष्पों में नयापन आ रहा है। क्योंकि शिशिर ऋतु चली गई है, वसंत जो है वो पतझड़ का सूचक है, और पतझड़ का मतलब है नया संसार बनना, नई सृष्टि होना। उसका भाव है कि फूल गिर गए हैं और मानो वो पृथ्वी का स्वागत कर रहे हैं और पृथ्वी को प्रेरित कर रहे हैं कि अब हम नई सृष्टि के लिए तैयार हैं, तुम उत्सव मनाओ। फुल्ल सुमनसां सुरभित पवनै, फुल्ल सुमनसां सुरभित पवनै, अवनितलार्पित कुसुम माल इह, विलसति होली खेला। अगली पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो वैर है, जो शत्रुता है, उस शत्रुता के नाश के प्रतीक के रूप में हम इस उत्सव को मनाते हैं, जिसमें हिरण्यकशिपु नाम का जो शत्रु है उसका हम दलन करते हैं, उसका दाह करते हैं, और तब होली का जो प्रकाशानल है, जो उसकी प्रकाश की ज्योति है, वह
प्रज्वलित होती है, प्रेम की ज्योति। वैर हिरण्यकशिपुरिपुदलने, वैर हिरण्यकशिपुरिपुदलने, प्रेम नृसिंहाकृति कराल इह विलसति होली खेला। और ये जो होली की अग्नि है, इसमें हमारे सारे दुर्गुण जल के भस्म हो जाएं और प्रीति की जो व्याप्ति है वो संपूर्ण संसार में हो जाए और हमारे हृदय के भवन में वो प्रेम का रस परिपूर्ण हो जाए। यह भाव है अगली पंक्तियों में। होला नल दल दलित दुर्गुण, होला नल दल दलित दुर्गुण, प्रीति रसांचित हृदयशाल इह विलसति होली खेला रे, इह विलसति होली खेला। दुख विषाद रहित मुख लेखा, हमारे मुख पर किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार का विषाद, उसकी कोई रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्षित पुलकित ललित भाल इह, हर्षित पुलकित ललित भाल इह विलसति होली खेला। इसकी अंतिम पंक्ति है गीतिरियम लसताद ऋषि गीता, गीतिरियम लसताद ऋषि गीता, सहृदय शुचिहृत कमलनाल इह विलसति होली खेला रे, इह विलसति होली खेला। ये जो ऋषिराज के द्वारा गाई गई गीति है, यह जो कविता लिखने वाले लोग हैं उनके हृदय कमल की नाल में यह प्रविष्ट हो जाए, ऐसा भाव है। अब एक और छोटा सा भाव है, वो भी होली का ही है और ये लोक संगीत है। ये तो आपके समक्ष शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया गया, अब ये लोक संगीत है और यह ब्रजभूमि से संबंधित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ब्रजभूमि है वृंदावन, वहाँ होली का एक अद्भुत उत्सव होता है। वहीं की धुन है व्रज भुवि विलसति होली लीला रस लीला, रस लीले नियमित शीला रस लीला, व्रज भुवि विलसति होली लीला रस लीला। व्यक्तिरभूद् वेणुर्वीणाया, व्यक्तिरभूद् वेणुर्वीणाया, ललित गीति नर्तन मेला रस लीला। गोप सखीभिर्मुदित मनोभिः, गोप सखीभिर्मुदित मनोभिः, क्रियते वर्ण वृष्टि खेला रस लीला हो, क्रियते वर्ण वृष्टि खेला रस लीला। वृंदावन भुवि प्रकृतिर्नृत्यते, हृत्सूद्भवति नवाहेला रस लीला हो, हृत्सूद्भवति नवाहेला रस लीला। राधा रासे कृष्ण विलासे, राधा रासे कृष्ण विलासे, श्री कृष्णस्य विरह वेला रस लीला। अंतिम चरण है ऋषिराजेन प्रमुदित मनसा, गीतिरियं क्रियते केला रस लीला हो, गीतिरियं क्रियते केला रस लीला। व्रज भुवि विलसति होली लीला रस लीला। तो इस प्रकार इन दोनों कविताओं के माध्यम से मैं आप सभी कवियों और विशिष्ट उत्कृष्ट श्रोताओं के मध्य होली के उत्सव का आह्वान कर रहा हूँ। हम सभी के जीवन में होली का एक
सुंदर उत्सव रहे, सभी प्रसन्न रहें, और इसी प्रसन्नता की प्रार्थना की अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। एक है सौंदर्य पर लिखी है कविता, और वह सौंदर्य जो है वो दो प्रकार का है। एक तो है भाव सौंदर्य और एक है रूप सौंदर्य। तो रूप सौंदर्य को लेकर एक नायक है और वो नायिका से कहता है जाके कि मेरे अंधेरे से भरे हुए हृदय में तुम्हारे रूप के सौंदर्य की जो किरण है उसने प्रेम का चित्र बना दिया है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश जो अमावस की काली रात है उसको अगले दिन उषा की लाली चित्रित कर देती है। फिर वो और आगे जाता है और कहता है कि तुम्हारे जो काले काले बाल हैं वो मानो सांप हैं और वो मुझे डंस रहे हैं, और जब वे मुझे डंसते हैं तो मानो मैं तुम्हारे प्रेम की अमृत की घूंट को पीकर प्रतिक्षण पुष्ट हो रहा हूँ। तो यह जो सौंदर्य है यह रूप सौंदर्य है। अब वो नायिका उसको उत्तर देती है और नायिका कहती है कि ठीक है, मैंने माना कि तुमने मेरे सौंदर्य की प्रशंसा की, पर जितनी तुमने मेरी प्रशंसा की है, जैसी तुमने मेरी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा तुमने कितनी सुंदरियों की है? वो सवाल पूछती है। तो नायक के पास कोई बहुत बढ़िया उत्तर नहीं है, वो चुप है, वो सुन रहा है। फिर वो कहती है कि कोई नहीं, मैंने माना कि तुम सौंदर्य के पुजारी हो, तुम मेरे शरीर के भोग के प्यासे हो, मैं तुमसे कुछ कहती हूँ, मेरी ओर से मनाही है, पर अगर तुम मुझे रोगी मानकर भी मुझे सुंदर मानो, अगर ये समझ लो कि मेरे शरीर का जो मध्य भाग है वो बहुत भारी हो गया है और मैं दुर्बल सी हो गई हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे अर्थराइट्स है, मुझे चलने में दिक्कत है ना, मेरा पूरा का पूरा जो शारीरिक संगठन है वो बिगड़ गया है, और मेरी अवस्था जो तुमने अभी 19-20 की वर्णित की है, मेरी अवस्था 40 से ऊपर है, और मेरे बाल जो हैं वो काले नहीं रहे, सांप की तरह नहीं हैं, अब सफ़ेद बालों से मैं निर्मल हो गई हूँ, और अगर तब भी तुम मुझे उसी प्रकार की परम सुंदरी मानते हो तो मेरे हृदय के अखंडित आसन पर तुम्हारे प्रेम का और तुम्हारा स्वागत है। तो यह जो भावबोध है सौंदर्य का, यह शाश्वत सौंदर्य है। महाकवि कालिदास को बाद वाला सौंदर्य पसंद है, यद्यपि पूरी दुनिया और जितने भी कवि विशेष रूप से सौंदर्य बोध की प्राचीन समय से बात करते रहे हैं वो लगभग उस उद्दाम रूप का सौंदर्य है। मुझे लगता है कि ये सौंदर्य बोध होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिराज जी। अब मैं संस्कृत की जो प्राचीन सभ्यता उससे आपके मैं कश्मीर ले चलता हूँ, जहाँ मेरा बच्चा में ये सही रूप में भी मेरा बच्चा है, क्योंकि कई साल पहले मुझे एक गांव से एक निमंत्रण मिला। डॉक्टर गगन सिद्धू, मुझे एक गांव से मतलब कि एक पुस्तक का विमोचन करना है, एक बुक लॉन्च करनी है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहली बारी ये बच्चा, तब शायद दाढ़ी मूछ नहीं थी, तब बिल्कुल इसके बिना था, वो इसकी पहली किताब थी जो मेरे हाथों जिसका विमोचन हुआ था, जिसका लॉन्च हुआ था। लेकिन अब मुझे बड़ा गर्व है और फख्र भी है और घमंड भी है कि ये मुझसे 2 कदम आगे चला गया है। और मेरा ये अकीदा है कि अगर उस्ताद का शागिर्द उसको पछाड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। सागर नज़ीर आज यहाँ इत्तेफाक से सहसा सुबह भी एक सागर था कश्मीर से जो वहाँ झलकाया था, सागर सरफराज इनका भी तखल्लुस है, और सागर नज़ीर सागर इनका भी तखल्लुस है। 2 सागर हैं और 2 सागरों के बीच में खुशकी पे बैठा हूँ। सागर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साहित्य अकादमी का मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसे शुभ मौक़ों पे वो बार बार हमें बुलाते हैं, और मेरे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब इस वक्त इस सेशन की सदारत कर रहे हैं और मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। और यहाँ पे हमारे कश्मीर की एक और शायरा जिनकी नज़में मुझे बेहद पसंद है, और नज़मों में जो इनका रंग है, इनका जो अलग एक अंदाज़ है,
वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी दिल को छू लेता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर शबनम अशाई जी है, और मेरे दोस्त सागर सरफराज साहब और बाकी जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं कुछ कविताओं का हिंदी रूप आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक मिनट मैं अब क्योंकि शायद मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाती हैं बातें। तो सागर नज़ीर की एक विशेषता है, वो ये कि लेट्स गो बैक टू द विलेजेस, आइए अपने गाँव की तरफ चलें। इनका एक लिखा हुआ गीत ही है वो, मैं उसको गज़ल नहीं कहूँगा, वो बहुत नज़म है, वो बहुत वायरल है और उसको गाया भी गया है और संगीतबद्ध भी किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से, जिसमें इसने कम से कम आजकल जो जनरेशन नेक्स्ट है उनको बताया है कि आपकी क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी गाँव में। खेत है, खलिहान थे, बाकी चीज़ें थी, यानी शाली जो हमारी होती है, बिकॉज हम वी आर राइस ईटर्स इन कश्मीर, तो हमारी सबसे ज़्यादा फसल होती है राइस की होती है। जैसे पंजाब में गेहूं है तो हमारे यहाँ राइस ज़्यादा होता है, हालांकि पंजाबी राइस का भी करते हैं लेकिन वो हमें खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। तो उसमें मैं उनका एक आग्रह करूंगा सागर नज़ीर से कि उसके भी कुछ लाइनें सुनाएं और उसका थोड़ा सा अनुवाद भी बताएं, ताकि जो हमारे दोस्त बैठे हैं शबनम डॉक्टर साहबा के बगैर, सागर और मुझे, इनको छोड़ करके कम से कम इनको समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। सागर नज़ीर। शुक्रिया डॉक्टर साहब, उसका अनुवाद तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी चंद लाइनें में, और उसके बाद उसी तर्ज की एक नज़म आपको मैं उसका हिंदी रूप आपके सामने रखूँगा। वन रश करित मीरासस छा तिम साद मनश तिम गामिक लुक, वन फत फत खा छा सारा पा, या वन छा वेच मज तारा खा, वेठ फुर छा जमीनस अजत दिवान, क्या वन छा क्या सोत गोंगुल छा वनते करा, क्या वन छा दान वान्य कड़ा, तिम साद मनुष्य तिम गामिक लुक। और उसी तरह की एक नज़म है, इसका जो टाइटल है वो है मैं उसी मकान में सुखी था। मैं उसी मकान में सुखी था जिस मकान की दीवारें माटी से रंगी हुई थी, जिसकी छत बाबा घास फूस से बनाता था, जिसके प्रांगण में मुर्गियों का डरबा सुंदर लगता था, जिसके कमरे घास की चट्टाइयों से सजे रहते थे, जिसमें सर्दियों की शामों में दादी कहानियाँ सुना बच्चों को सुलाती थी, जिसमें हर सुख था, शांति थी, हर दिन जिंदगी एक नए अंदाज में अंगड़ाई लेती थी, जहाँ शामें मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाती थी, जहाँ फिजाएं माटी की सौंधी खुशबू से महकती थी। मैं उसी मकान में सुखी था, बहुत खुश था। शुक्रिया। मैं उसी मकान में सुखी था, बहुत खुश था। वसंत के आते ही जहां कोयले छत पे अपना घोंसला बना चहचहाकर सारे गांवों को नींद से जगाती थी, जहां मासियां फूफियां आकर रौनकें बढ़ाती थी, जहां दादा दादी बच्चों पर मुँह लुटाते थे, जिसके बरामदे पर एक तरह गाँवों के बड़े बुजुर्ग अपना सुख दुख एक दूसरे से साझा करते थे, जिसकी सीढ़ियों पर पड़ी रहती थी लकड़ी की वो चप्पलें, वो जिसकी छत के नीचे परिंदे बनाते थे अपना आशियाना, वो जिसकी खिड़की पर तड़के आती थी वो नन्ही चिड़ियाँ, वो जहाँ कभी मैना और कभी बुलबुल गीत गाते चले आते। मैं उसी मकान में सुखी था, मैं उसी मकान में सुखी था, बहुत खुश था। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जहाँ दीवारों पे लकड़ी से तराशी गई खिड़कियाँ, वो दरवाजे बयां करते थे सादगी की कहानी, वो जहाँ भाईचारे की छाई रहती थी खुशबुएं, वो जहाँ छोटे बड़ों में प्यार था, सम्मान था, वो जहाँ की रसोई में पड़ा रहता था बड़ा सा घरौंदा और जिस पर सजा रहता था माटी का वो गड़ा, बर्तनों से बड़ी टोकरी और खाने का वो डिब्बा। नए बंगले में हर सुविधा है, दौलत की रेल पेल है, लेकिन चैन की नींद के लिए तरसता रहता हूँ फिर भी,
ये क्या दर्द, ये कैसी उलझन में फंस गया हूँ, ये कैसा दर्द जो मेरा सीना कर रहा है छलनी। दिल गवाही दे रहा, कह रहा है सागर, मैं उसी मकान में खुश था, मैं उसी मकान में सुखी था, बहुत खुश था। एक और नज्म है, आशा। बीत जाएगा पतझड़ का मौसम, निर्जन निर्जन फूल खिलेंगे, मेरी इन शीतल सांसों को गरमा देगा तेरे आगोश का स्पर्श। अब न पलकों पे जमी रहेगी नमी, अब न खुबेगी दिल में दर्द की किरचियाँ, पेड़ों पर फूटेगी खुशियों की फिर कोंपल, पतझड़ की लौ से जर्जर सपने लेंगे पुनर्जन्म। पतझड़ की लौ से जर्जर सपने लेंगे पुनर्जन्म, अलहट किशोरियों के मधुर गीत सुरों से फिर गूंज उठेंगे गाँवों के वीरां पड़े खेत। मेरे दिल के सोने कैनवास पे चढ़ जाएगा तेरी प्रीत का रंग, मेरे दिल के सोने कैनवास पे चढ़ जाएगा तेरी प्रीत का रंग। मेरे मोह और तेरी वफा से महक उठेगा हर सो मंजर, देहरी से तेरे फिर बस जाएगा उजड़ा चमन, मिट जाएगी मेरे भी माथे की दर्दो शिकन। आकाश की चंद्रमा होंगी हमारी खुशियों की गवाह, और तारे बनेंगे तेरी चुनरी की गोटियां। आकाश की चंद्रमा होंगी हमारी खुशियों की गवाह, और तारे बनेंगी तेरी चुनरी की गोटियां। उसी तुम्हारी पसंद की लय पर सखियां गाएंगी मधुर मधुर सुख के गीत, स्वर्ग की मेहंदी से सजेगी तेरी हथेलियां। दुल्हन बना तुझे पी संग विदा करने के, साकार होंगे तेरी माँ के वो सारे सपने, साकार होंगे तेरी माँ के वो सारे सपने। धीरज रख लो, आशा है मुझे, लग जाएगी नैया किनारे, हमारा होगा संगम उसी सागर में जहाँ खुद ईश्वर सवार देता है बागी के मारे सारे गुडमुट चेहरे। शुक्रिया। एक और नज्म है, मुझे तन्हा करके चले गए तुम बहार की बदली की तरह। शबनम जी, मैं तवज्जो चाहता हूँ। मुझे तन्हा करके चले गए तुम बहार की बदली की तरह, गाँव की पगडंडियों पे झूमते लहराते, खेत खलियानों में गाते गुनगुनाते। मेरे प्रियतम, तुमने अपनी इच्छा अनुसार जिया जीवन, सतरंगी बहारों में गुजारा समय, जैसे चाहा उठवाया लाड। सतरंगी बहारों में गुजारा समय, जैसे चाहा उठवाया लाड। और मैं अपने भाग्य की उन्हीं समस्याओं को सुलझाने का संघर्ष करती रही जो तुमने मुझे भेंट की थी शुरू से लेकर अंत तक। मेरे प्रियतम, मैं उसी डगर पर बैठी आग उगलते सूर्य में झुलसती रही। मैं सतरंगी सुंदर फूल बिरहा में कुमला गई हूँ, कब आएगा मेरा प्रियतम अपने दर्शन से जीवित करने। आखिरी एक नज़्म है, तुम मेरे सब राजों से अवगत थे प्रियतम, मैं जैसी थी तुम्हारी थी, तुम जैसे थे बस मेरे थे। मैं जो भी मांगती थी तुम लाके देते थे, जानती हूँ तुम 12 पहर मेरे पास रहते थे। महीने की वो पीढ़ा तुम्हारे साथ साझा करती थी, अब किसके साथ बांटूं पीड़ा अपनी, पराये घर बिहाई गई हूँ, सब अपनों से दूर हो गई हूँ। मेरी छाओं के सब फूल कुमला गए हैं। मेरे प्रियतम आओ, तुम्हें दिल के सभी गाँव दिखाऊं, मेरी कलाइयों की सभी वो चूड़ियाँ टूट गई हैं। चेहरे पे मायूसियाँ मेरे घर कर चुकी है, वो मेरा लड़कपन वो लाड सब छूट गया है। अब मेरी नज़रों से मेरा हमदम ओझल हो चुका है। कहाँ से आई मैं किसे मालूम, कहाँ जन्मी मैं किसे मालूम। मेरी पीड़ा को सुलझा लो मेरे प्रियतम, असफलता ने घेरा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उर्दू के 2 बड़े नाम यहाँ पर हमारे साथ हैं। एक तो मेरे दोस्त, मेरे भाई जो उर्दू एडवाइज़री बोर्ड के कन्वीनर भी हैं, चंद्रपाल ख़याल साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम एक सीरियस और एक बहुत बढ़िया नाम सुनेगा, लेकिन आपने
आपके लिए मैंने तोहफा रखा था, लेकिन वो तोहफा मैंने पहले ही, और मैंने एक रिवायत तोड़ी कि जैसे अवार्ड फंक्शन में उर्दू लास्ट में होता है, तो मैंने कहा मैं यू से शुरू नहीं करूंगा, मैं अलिफ से शुरू करूंगा, तो मैंने अलिफ से शुरू किया था। तो बहरहाल इससे बहुत अच्छा पड़ा। मैं इसे गुजारिश करूंगा कि अगर उसको कुछ याद है वो लिखे 5 मिनट में। तो और दूसरी जो मेरी कलीग रही रेडियो कश्मीर श्रीनगर में, बहुत ही प्यारी आवाज़ थी, हैं रादर, क्योंकि अब ये मेरी तरह रिटायर, इसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। डॉक्टर शबनम शाही साहिबा मेरे साथ रेडियो कश्मीर श्रीनगर में थी और बड़ा अच्छा साथ रहा। इनके घर से संबंध, इनके वालिद साहब के साथ भी मेरी दोस्ती थी। मेरे ही इलाके की रहने वाली हैं, मेरे ही ज़िले की रहने वाली, और मैं जब जाता हूँ अपने घर माँ के पास जो अब नहीं रही, तो मैं इनके घर को देखता हूँ जो ऊंचाई पे है। तो मैंने कहा कि यहाँ इस जगह पे रहकर अगर शबनम शाही शायरा नहीं होती तो क्या होती। इतना खूबसूरत जगह है वो। तो अब नेपाली नहीं आए हमारे, क्योंकि एक सदस्य शायद नहीं आए, लेकिन नेपाली से पहले मैं अपने जो बच्चा है अपना बंगाल से आया है, नमूगना मुखोपाध्याय। ये मिष्टी वाला आदमी है, ये बिष्टी वाला आदमी है, वो बारिश और मिठाई भी होती है। और मैं इनके साथ बहुत रहा हूँ। इन्होंने महसूस नहीं किया जब ये आए, मैंने इनको कहा था बोशन बोशन, ये नहीं सुने। तो लेकिन मैं इनकी भाषा भी खूब समझता हूँ, इसलिए ये अपनी बंगाली में भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद अनुदित भी। मुखोपाध्याय साहब। Thank you, sir, for your kind introduction. First of all, I would like to express my utmost gratitude to Sahitya Academy for giving me such an opportunity. And I thank Academy again for playing the quintessential role of a lighthouse in the arena of Indian literature. Today, I'm going to read a few of my poems, first in my mother tongue, Bengali, then their respective translated versions. My first poem is titled Shabdo. শব্দ। এই শান্ত ভোরবেলায় সেই সব উচ্চারণ স্মরণ করো যাদের হাজার ব্যবহারেও নষ্ট করা যায়নি। স্মরণ করো সেই সব স্বীকারোক্তি যাদের লিখতে লিখতে তোমাদের ভেতর বহু গাছের মৃত্যু ঘটে গেছে। হে ভাবলেশীন স্বয়ংক্রিয় বন্ধু বান্ধব, তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অজস্র বিদেশি ভাষার কবর ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাই না আর। কার শব্দ বলো তোমরা? কার চিৎকার অনুবাদ করতে করতে তোমরা নিজেদের হাসি কুপিয়ে ফেলছো? এখানে ঈশ্বরের মতো দেখতে অগুন্তি শিশু তোমাদের এই নৃশংসতা বুঝতে বুঝতে বড় হচ্ছে। ওদের প্রতিটি কান্নার মধ্যে মৃত গাছগুলোর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা শুরুতে আমাদের বিহ্বল করেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে বোধগম্য হয় এই সমস্ত শিশু কান্না অনুবাদের অযোগ্য, স্বীকারোক্তির বিপ্রতীপ। শিশুর মতো দেখতে ঈশ্বর কোপানো হাসিগুলোর ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। এই দৃশ্য লিখতে গেলে শব্দ নয়, স্তব্ধতা জরুরি। এই শান্ত ভোরবেলায় অক্ষত উচ্চারণগুলি পোড়ানোর নিমিত্তে স্মরণ করো অগ্নি। শব্দ ধারণের যোগ্য কোনো মুখ যদি জন্ম নেয় কয়েক প্রজন্ম পর, তার সহজ হাঁয়ের ভেতর আমরা ঠিক খুঁজে পাব আজকের ছাই। আবার ভাষা হবে তখন, আবার অর্থস্থাপনের এলোপাথাড়ি খেলা। আপাতত হে রহস্যময় বন্ধু বান্ধব, যে যার একাকী হাত মৌন জলে রাখো। আর শব্দ নয়, আর অর্থস্তর নয়, স্তব্ধতা বোঝার মন তোমাদের শেষ পরিত্রাণ। Now the translated version of this poem. The title of this poem is Word. In this serene daybreak, recall those utterances that are still pristine, though used for umpteenth times. Recall those confessions that have witnessed the death of numerous trees within you all while you were engrossed in jotting them down. O indifferently automated friends, the moment I stare at your faces,
I discover nothing but numerous sarcophagi of foreign languages. Whose words do you utter now? Whose screams have you been translating while butchering your own smiles? Here, godlike children are growing up, witnessing such brutality. In the beginning, we were overwhelmed by noticing the possibility of the resurrection of those dead trees in their wailing. But have understood gradually, such wailing remains indecipherable, remains abjectly antithetical to confession as well. Here, the childlike God is wriggling all over those slaughtered smiles. Not words, but silence is essential in order to transcript this sight. In this tranquil daybreak, invoke fire to burn those intact utterances. If any visage worthy of words ever appears after several generations, we will surely find today's cinders in its gape. Language, with its arbitrary game of imposing meanings, will arise again. O enigmatic friends, just keep your hands on silent water for now. Neither words nor the layers of meaning, only the mind that realizes silence is the relic of your final salvation. The next poem is called পার্থিব। খুব যুক্তিবুদ্ধির নয় এই গ্রহ, কারো স্পর্শের তলায় ভক্ত কুকুরের মতো লাট্টু। শান্ত চা দোকানের ধোঁয়ার মধ্যে ভেসে যাচ্ছে সকাল। আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি, আর আমাদের পেছন পেছন গল্প। তার উৎসুক লেজ নড়ে আনন্দে, পায়ে ভিন্ন প্রজাতির আখ্যান কখনো কামড়ে দিয়েছিল আচমকা, সেহেতু ঘন দাগ। কারো স্নেহের তলায় সে ভাবে না, ভাবে স্নেহ, ভাবে দিন গড়িয়ে দুপুর। আর কারো বাড়ির বউ খুব আদর সাজিয়ে ঠিক খেতে দেবে তাকে। খুব নির্বাচন প্রচারের নয় এই গ্রহ, কারো লেখার তলায় প্রিয় সম্ভাবনার মতো সাদা। কেউ না কেউ প্রেম লিখে হাও হাও করে কেঁদে শোবে তার উপর, আর সে তার সারা দিনের উপেক্ষা চেটে দেবে ধীরে। খুব দীর্ঘজীবীদের জন্য নয় এই গ্রহ, অধিকাংশ মৃত, শুধু কেউ কেউ আড়ালে জেনেছে ভক্ত কুকুরের মুখ দুরারোগ্য সুখের পাথর। The translated version of this poetry, the title is called Telluric. This planet does not belong to profound logic or intellect. It is just a devoted dog that swirls like a spinning top under someone's affectionate touch. The morning is hovering through the swirling smoke of tranquility stall. We have set out on a trip, being followed by a story. Its eager tail wags in ecstasy. A deep scar dwells on its body, caused by a sudden bite of a fable of different breed. Beneath somebody's affection, it doesn't care about such things though, only muses upon the very affection, ponders over how the morning is drifting towards noon, dreams of a household where a lady would serve it food with utmost care. This planet has never belonged entirely to campaigns and elections. It's just like a pale yet beautiful possibility that finds refuge in someone's writings. The moment someone scribbles love and reposes on it sobbing, it starts licking wounds of refusal off his recumbent heart with gentle tongue. This world doesn't belong to those who live long. Most of us are already dead. Only a few descend upon this esoteric truth. The devoted dog's face is nothing but a stone that belongs to fatal happiness. Last poem, জটিল। জটিলতা যে মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়, ভরসা করার মতো সহজ ও পবিত্র কিছু থাকে না আর। এখানে বহু মানুষ প্ররোচনা দেয় একা হওয়ার,
যেন একা হলেই তুমি টের পাবে রহস্যের ভিতরের বিস্ময়, অথচ ভিড়ের মধ্যিখানে আমাদের জন্ম, ভিড়ের মধ্যিখানেই আমাদের মৃত্যু। এই সত্যের তো কোনো বিকল্প নেই। জটিলতা যে মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়, ধারণ করার যোগ্য কোনো বিদ্যা আর শরীরে আসে না। বিদায় করতে চেয়েছিলাম যেসব দুঃখ, মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম যেসব তাড়নার মাংস, তাদের ছায়ারা আমাদেরই ধৈর্য আঁচড়ায় রোজ। বিদ্যার স্যাঁতস্যাঁতে পরাগ আমাদের মুখে নেমে আসে, তারপর আমাদেরই ক্ষত বেয়ে উঠে আসতে থাকে সন্তপ্ত সন্ততি। জটিলতা যে মুহূর্তে মৃত্যু শীতল, শুশ্রূষা পাওয়ার যোগ্য কোনো ক্ষত জাগ্রত থাকে না আর। আমরা বলে উঠলাম প্রেম, আর আমাদের হাড় বরাবর ফুটে উঠতে থাকা সমস্ত ফুল বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলো এক লহমায়। এ যদি সহজ হওয়া, এ তবে আমার যোগ্য নয়। The translated version, the title is Complex. The moment complexity comes to an end, there remains nothing pure and simple enough to rely on. Here, numbers of people provoke us to embrace solitude, as if being alone will help you decipher the wonder within mystery. But the very truth that we were born in the midst of crowd and our death will occur in the midst of equivalent rabble has no alternative. The moment complexity comes to an end, no learning worth preserving gets intimate anymore. Those agonies that we tried to discard, the flames of those temptations that we tried to wipe away, their shadows gnaw at our patience daily. The moist pollen grains of knowledge descend upon our mouths then, and aggrieved offsprings start emerging from our wounds. The moment complexity turns dead cold, no wounds worth nursing remain awake anymore. We utter love, and all our flowers that once bloomed across our bones turn electrocuted in a jiffy. If this is how becoming simple happens, this process doesn't deserve myself. Thank you. थैंक यू वेरी मच मिस्टर तिमुगना मुखोपाध्याय, बहुत सुंदर है। मैंने एक जुमला कहा था ख्याल साहब के जब ये बच्चा पहली किताब और पहली गज़ल लिख रहा था तो इसने मुझे बुलाया, तो मैंने एक बहुत अच्छा काम किया जानबूझ करके कि उसको प्लेटफॉर्म दिया, और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक इस शख्स के लिए। ये मेरा अकीदा है, और मुझे पता है कि चंद्रपाल ख्याल साहब भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, ऐसे ही शख्सियत हैं। तो मैं चाहूँगा कि उमर फरहत एक छोटी सी एक गज़ल या नज़म है वो पढ़ें, ताकि आपके जहन में भी ये नौजवान आ जाए, और पता नहीं कि आगे फिर कितने उफ़क़ होंगे। ये ख़ास आपके लिए। इस दुनिया से डरता हूँ, इस दुनिया से डरता हूँ, यानी बिल्कुल तन्हा हूँ। इस दुनिया से डरता हूँ यानी बिल्कुल तन्हा हूँ। बुरी मिसालें देते हो, बुरी मिसालें देते हो और कहते हो अच्छा हूँ। बुरी मिसालें देते हो और कहते हो अच्छा हूँ। तुम्हें गुजारा करना है, तुम्हें गुजारा करना है, मैं चाहे अब जैसा हूँ। मैं चाहे अब जैसा हूँ, जैसे हैं आमाल मेरे, जैसे हैं आमाल मेरे, मालिक तेरा बंदा हूँ। जैसे हैं आमाल मेरे, मालिक तेरा बंदा हूँ। पढ़ना भी तो ज़रूरी है, पढ़ना भी तो ज़रूरी है, शेर तो अच्छे कहता हूँ। पढ़ना भी तो ज़रूरी है, शेर तो अच्छे कहता हूँ। फ़रहत के बातिन को देखो, फ़रहत के बातिन को देखो, ये मत पूछो कैसा हूँ। बहुत अच्छा उमर फरहत। एंड हम आपके जो आगे की ज़िंदगी उसमें तरक्कियाँ के लिए दुआ करते हैं, नॉट ओनली फॉर यू बट जितने भी मेरे दाएं बाएं बैठे हैं नौजवान,
तो मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ, मैं मनोकामना करता हूँ कि ये जो साहित्य के हैं, जो अपनी क्रियाशीलता के, वो उस क्षितिज को छू लें कि जहाँ कोई अंत न हो। अब आखिर में, बिकॉज मैडम हमारे ये शायद नेपाली नहीं आए हैं, नेपाल ही हैज़ नॉट कम एनीवे, तो लास्ट में कि जिस जुबान को का नाम आते ही पूरा शरीर, पूरा जिस्म थरकने को दिल करता है, कि न जानते हुए भी, न पहचानते हुए भी, न समझते हुए भी लोग समझते हैं, और वो जुबान है पंजाबी। तो पंजाबी के लिए जो एक बहुत अच्छा नाम आया, क्योंकि मैं इनसे बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन अभी मेरे इस बच्चे डॉक्टर गगन सिंधु ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पंजाबी कविता करते हैं, क्योंकि पंजाबी में कविता नहीं होती है, कविता होती है, वो वर्ण की जगह ब होती है, तो ये कविता बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं आज इनको सुनूंगा आपके साथ साथ, और मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी अभी ये लाहौर से आए हैं, तो वहाँ की पंजाबी और हमारी पंजाबी में भाषा के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है, न लोगों में फ़र्क है, लेकिन अगर फ़र्क यह है वो वाघा सरहद ही है, और बात कुछ नहीं है। बाकी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जगदीप संधू। बहुत शुक्रिया सर। मंच, आदरणीय मंच और श्रोतागण, पहले एक पंजाबी में, उसका अनुवाद, फिर 3-4 कविताएं। कविता का नाम माँ। आई माँ गमगीन सी, आई माँ गमगीन सी, उसकी सहेली चली गई हार्ट अटैक नाल। आई माँ गमगीन सी, उसकी सहेली चली गई हार्ट अटैक नाल। उसने दाल सब्जी विच घ्यो पाउणा बंद कर दिता, उसने दाल सब्जी विच घ्यो पाउणा बंद कर दिता। पिछली बार उसने बाहर आउणा जाना कर दिता सी बंद, मते थले ना जावे वाहन किसे दे। पिछली बार उसने बाहर आउणा जाना कर दिता सी बंद, मते थले ना जावे वाहन किसी दे। सहेलियां दा मरण संभाल रही हो, सहेलियां दा मरण संभाल रही हो ते जिंदगी अपनी। शुक्रिया जी। कविता होने का अनुवाद, इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूं अभी। इसका अनुवाद नहीं मिल रहा तो तब तक मैं दूसरी कविता हिंदी में पढ़ देता हूं। हाँ जी, कविता है अंगदान की वसीयत। अंगदान की वसीयत। मैं अस्पताल से आया था, मुझे घर से अस्पताल ही भेज देना। मैं अस्पताल से आया था, मुझे घर से अस्पताल ही भेज देना। भीड़ लोगों की नहीं, काफिला सोच का होगा साथ मेरे। भीड़ लोगों की नहीं, काफिला अच्छी सोच का होगा साथ मेरे। मेरी काली आंखें भी देगी, मेरी काली आंखें भी देंगी रोशनी किसी को। मेरी काली आंखें भी देंगी रोशनी किसी को। मेरे गुर्दों से शायद कुछ लोगों को ये साफ होगा कि मिल सकती है इसको जिंदगी, किसी को जिंदगी नहीं। ये काम दिल और जिगर से पूरा होगा, ये काम दिल और जिगर से पूरा होगा। लाइटें जगेंगी ऑपरेशन थिएटर की, लाइटें जगेंगी ऑपरेशन थिएटर की। मरकर भी निभाऊंगा एक किरदार। लाइटें जगेंगी ऑपरेशन थिएटर की, मरकर भी निभाऊंगा एक किरदार। नई रोशनी मिलेगी जिस्म मेरे से, नई रोशनी मिलेगी जिस्म मेरे से। कुछ रोशनी करके जाऊंगा धुआं नहीं, जाऊंगा धुआं नहीं। अच्छा, शुक्रिया जी। कविता है जी बेटी। मेरी बच्ची तेरे आने से मेरा भी एक नया जन्म हुआ। मेरी बच्ची तेरे आने से मेरा भी एक नया जन्म हुआ एक पिता का। तेरे आने से ही जाना मैंने एक बच्चा भी सृजक हो सकता है। तेरे आने से जाना मैंने एक बच्चा भी सृजक हो सकता है। पैदा कर दिए तूने कितने रिश्ते नाते, भूआ फूफा मासी मासड़। बना दिया तूने मुझे एक अच्छा पुत्र, बना दिया तूने मुझे एक अच्छा पुत्र। समझ सका मैं अपने माता पिता की पीड़ा,
एक पिता बन के। तुझसे ही जाना मैंने दुनिया के डरों, आंसुओं के जोर और आँख की भयानकता के बारे में। तुझसे ही जाना मैंने दुनिया के डरों, आंसुओं के जोर और आँख की भयानकता के बारे में। बहुत देर बाद याद आया कि बच्चों का तो जंगल भी भयानक नहीं होता। बहुत देर बाद याद आया कि बच्चों का तो जंगल भी भयानक नहीं होता। सुनाने लगा जब तुम्हें चूहे और शेर की कथा। सुनाने लगा जब तुम्हें चूहे और शेर की कथा। ओ मेरी नन्ही परी, तेरे कारण मेरा नज़रिया बड़ा हुआ। ओ मेरी नन्ही परी, तेरे आने से मेरा नज़रिया बड़ा हुआ। पहली बार मैंने बुरा मनाया खत्म हो रही चिड़ियों का। एक छोटी सी कविता है, हंसी की कीमत। 6 महीने की हो गई है बेटी मेरी, 6 महीने की हो गई है बेटी मेरी, दांत निकाल रही है। 6 महीने की हो गई है बेटी मेरी, दांत निकाल रही है। पसीना आता है, जिद करती है, रोती है। पसीना आता है, जिद करती है, रोती है। एक सुंदर हंसी के पीछे, एक सुंदर हंसी के पीछे कितना दुख सहना पड़ता है, कुछ महीनों का बच्चा समझा देता है। शुक्रिया जी। देखता हूँ कोई अगर हिंदी में ट्रांसलेशन बची होगी तो जरूर सुनाता हूँ। एक छोटी सी कविता है, मासूम। 2.5 साल की बेटी मेरी अक्सर शब्दों को यूं बरतती है। 2.5 साल की बेटी मेरी शब्दों को यूं बरतती है। पापा मेरे बाल जोड़ दो, पापा मुझे केला खोलकर दे दो। 2.5 साल की बेटी मेरी लफ्जों को यूं बरतती है। पापा मेरे बाल जोड़ दो, पापा मुझे केला खोलकर दे दो। मैं उस जैसा मासूम सच्चा नहीं बन सकता, मुझ जैसा मासूम सच्चा नहीं बन सकता। मैं बालों को बांध देता हूं और केला छील देता हूं। शुक्रिया जी। लेडी एंड जेंट, हाँ नहीं इधर लेडी है तो लेडीज हो गया। आई थॉट अदरवाइज आई हैव टू से लेडी एंड जेंटलमैन, तो आप लेडीज हो गए हैं क्योंकि यहाँ 2 ही थे, अब 3 हो गए। बट मेरा जो बैकग्राउंड है वो मीडिया का रहा है, रेडियो टेलीविज़न, तो इसमें हम क्वांटिटी पे नहीं जोर देते हैं, क्वालिटी पे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जो आज इन नौजवानों ने अपनी कविताएं पढ़ी हैं तो उसमें रस भी था, श्रृंगार भी था और आगे मुस्तकबिल की उम्मीद भी थी। देयर वाज अ होप फॉर द फ्यूचर आल्सो। And I am very thankful to Sahitya Academy and its management for having given me this beautiful opportunity to sit with the youngsters and feel young. Because I'm an old man now. I'm almost 65, 67. So you have to be. So you have to be younger than me when you come to 67. और फिर आपने मुझे बहुत कुछ, आपने बचपना भी दिखाया, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। आपने मुझे ये भी सिखाया कि जब बेटी का दांत निकलने को आता है तो उस वक्त क्या महसूस होता है। मेरी बेटी भी है, दूर प्रदेश में है, तो उसका भी बच्चा हुआ तो उसके भी आजकल यही समस्या है जो आपकी समस्या है, दांत निकल रहे हैं और उसमें क्या समस्याएं होती हैं वो माँ ही समझती हैं कि जब बच्चे का। मैं शायर तो नहीं हूँ लेकिन शायर बनाया गया हूँ। मैं अनुवादक था, मुतरजिम था, तर्जुमे करता था, ट्रांसलेटर हूँ बेसिकली। हिंदी से कश्मीरी, कश्मीरी से हिंदी, अंग्रेज़ी से कश्मीरी, कश्मीरी से अंग्रेज़ी। और उन भाषाओं जो मैं पढ़ता हूँ अभी आजकल, खासी जो लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट की, मेघालय की, वहाँ की जो फोक टेल्स हैं उनको कश्मीरी में हमने अनुदित किया है और वो पब्लिश हो गए, साहित्य अकेडमी ने कर लिया है। और अभी कल ही
मेरी किताब शायद प्रेस में आ गई है, अवुच, जो मनोहर श्याम जोशी जो बहुत बड़े सीरियल में लिखे थे, उनकी जो हिंदी नॉवल है क्या, उसका कश्मीरी अनुवाद वो शायद कल छप के आ गई है। लेकिन अचानक एक दिन मैंने एक मैसेज भेजा था अपने एक दोस्त को, जो कश्मीर के शायरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, शहनाज रशीद साहब। मैंने उनको एक बार, मैं सेक्रेटरी कल्चर था, तो मैंने उनको एक एसएमएस भेजा था। उन्होंने कहा बहुत अच्छी नज़म है, और वो बहुत बड़े शायर हैं। तो जब उन्होंने कहा बहुत अच्छी नज़म है, तो फिर उसके बाद मुझे भी लगा कि मैं तो शायर हो गया हूँ, क्योंकि रात को तो मैं सोया था ठीक ठाक, तो सुबह जब मैं जागा तो शायर हो गया था। वो नज़म थी, मैं इसका तर्जुमा अंग्रेजी में और हिंदी में, उर्दू में और गुजराती में और पंजाबी में भी सुना सकता हूँ जी, क्योंकि पुस्तक तो कविता हो जाएगी इधर में। मेनस इसका शीर्षक है गाम त कब्रिस्तान। गाम गाम है, कब्रिस्तान कब्रिस्तान है, त और के लिए यूज किया जाता है कश्मीरी में, गांव और कब्रिस्तान। मेरे गांव में मीन्स, पहले मैं कश्मीरी में बोलता हूँ ताकि जो पेमेंट यहाँ मिल रही है वो जस्टिफाई हो जाए, उसी के लिए बुक हुआ हूँ। तो ये जो यहाँ पर ये गुप्तचर बैठी है ना, तो ये बताएंगे ना, उन्होंने कश्मीरी में नहीं पढ़ी है, इनको पेमेंट ना दी जाए। गाम तो कब्रिस्तान, मेनिस गामस मज ओस अकिस कोनस मज अख कब्रिस्तान, कस ताई कब्र आस मेनिस गाम किस कब्रिस्तानस मज, कस ताई लरे आस मेनिस गामस मज, मगर सागर मेन गामन कचकोर कर तरक्की, मेन गामन कचकोर कर तरक्की, कब्रिस्तान वो तो रच रच प्रत घर किस भ्रांतस्तान। मेरे गांव में एक छोटा सा कब्रिस्तान था ख्याल साहब, कुछ ही कब्रें थी मेरे गांव के कब्रिस्तान में, कुछ ही घर थे मेरे गांव में, लेकिन मेरे गांव ने बहुत तरक्की की, बहुत प्रगति की। कब्रिस्तान धीरे धीरे हर घर के बरामदे तक पहुंचा। That's all. और एक है जो डॉक्टर गगन संधू ने अपनी किताब में अभी उसका अनुवाद किया है, वो नेम प्लेट के, जो हमारे कश्मीर के अकेले ज्ञानपीठ पुरस्कृत प्रोफेसर रहमान राय स्वर्गीय, उन्होंने ये कहा कि रफ़ीक मसूदी की कविताओं की विशेषता ये है कि एक पन्ने में 5 कविताएं आती हैं। यानी जब आप लिखते हैं कि एक पेज में इनकी 5 कविताएं आती हैं, तीन लाइन्स में मेरी कविता समाप्त हो जाती है। तो नेम प्लेट इनको बहुत पसंद है, और यहाँ जो जब भी डॉक्टर गगन संधू जाते हैं तो ये वो पढ़ते हैं। और पिछली बार जब जहाँ पढ़ी तो फिर उसके बाद मुझे बड़े फ़ोन आए कि इसका कश्मीरी बता दीजिए। नेम प्लेट जो होती है ना, तख्ती लगी होती है कमरों के बाहर। सो आयो पन्य गाम पट पन्निस निचिस शहर समखनी, सो आयो पन्य गाम पट पन्निस निचिस शहर समखनी, प्रथ कमरस में छोड़ुन परुन निचू कुन लोबुन निचू, तस्मा उस तक नेम प्लेट पर कविता खत्म। वो अपने बेटे की तलाश में गांव से शहर चला आया था, अपने बेटे की तलाश में हर कमरा देखा, लेकिन उसे अपना बेटा नहीं मिला। उसको नेम प्लेट पढ़नी नहीं आती थी। अब एक ताज़ा है जो पिछले दिनों ही लिखी गई है, वो खाली डिब्बा है। खाली डिब्बा है क्योंकि ये थोड़ा बिंबात्मक है। दिस इज अ मेटाफोरिक पोएम बिकॉज दिस इज रिटन एज अ मेटाफोर, खाली डिब्बा। और मैं अपने आप को संबोधित करता हूँ कि खाली डिब्बा, आई एम द
डिब्बा जो खाली है। खाली डिब्बा देखकर मनुष्य कभी कभी तो सोचता होगा कि मेरा वजूद लर्ज उठेगा एक दिन। ये सोचकर कि कल मेरे शरीर में, ये सोचकर कि कल मेरा शरीर भी खाली डिब्बा हो जाएगा। अभी इस डिब्बे में मैं क्षमा चाहता हूं, ये जो दूरदर्शन, ये डीडी भारती से, इसको जरा बता दें आप। जो मेरा पुराना डिपार्टमेंट है कहते हैं वो, इनको पता ही कि आप आए नहीं है, वो हम खत्म हो करने को। दोबारा पढ़ता हूँ ख्याल साहब। खाली डिब्बा देखकर कभी मनुष्य ये सोचता होगा कि मेरा वजूद भी खाली डिब्बा है, और ये सोचकर कि कल को मेरे जिस्म से, कल मेरा जिस्म भी खाली डिब्बा हो जाएगा। अभी इसमें रंग है, सूरत है, लाली है, काली है, रूप है, पेंट है, दाल है, चना है, नमक है, मिर्ची है इस खाली डिब्बे में। उसी तरह जैसे पेंट के कई डिब्बे, मसाले के कई डिब्बे अपनी बहनों माओं के किचनों में सजाए रहे थे, रंगीन हुआ करते हैं ये सब डिब्बे, मगर एक दिन ये पेंट सब खत्म हो जाएगा, ये मिर्ची सब इस्तेमाल होगी, ये सब दूध खत्म हो जाएगा, ये मसाले सब खत्म हो जाएंगे, और उस खाली डिब्बे को या तो फेरी वाले के हवाले कर दिया जाएगा, या फिर घर के किसी कोने में डस्टबिन में बना के छोड़ दिया जाएगा। ये खाली डिब्बा। और मुझे लगता है कि मेरा शरीर भी कल को एक दिन खाली डिब्बा हो जाएगा, तो मुझे भी उठा करके किसी कब्र में, किसी शमशान घाट की चिता पे लिटाया जाएगा, और तब ये खाली डिब्बा किसी काम का नहीं रहेगा। एक आखिरी है जो इन्हीं दिनों यहाँ दिल्ली में ही पैदा हुई है। ये कश्मीरी में ही है, लेकिन मैं इसका उर्दू या हिंदी बोलिए। याद। उस चिनार के नीचे, ख्याल साहब, उस चिनार के नीचे एक साया रहता था। डॉक्टर शबनम अशाई नज़म की बहुत ही बड़ी अच्छी शायरा हैं, बड़ी मानी जानी शायरा हैं। उस चिनार के नीचे एक साया रहता था, तपती धूप में लेटा था वो साया। कंट्राडिक्शन है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। उस चिनार के नीचे एक साया रहता था, तपती धूप में लेटा था वो साया, मगर सुनते हैं वो साया कब का जमीन बोस हो गया। मगर सुनते हैं वो साया कब का जमीन बोस हो गया, मगर नादानों को कौन समझाए, मगर नादानों को कौन समझाए, साए जमीन बोस नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बचपन में हमको ये जोक सुनाया करते थे कि कोई साहब भाग रहे थे तो उसके पीछे दूसरा भाग रहा था, तो उन्हें बोला तुम क्यों भाग रहे थे? कह रहे साहब इन्होंने पूरा दीवान मुझे अभी सुनाया, अब मैंने कहा था कि मेरी एक गज़ल सुनो और चल भाग दिया, तो अब इसको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा जोक जो मेरे साथ हुआ है वो नागालैंड में था। मैं नागालैंड में दूरदर्शन में था असिस्टेंट डायरेक्टर, तो हमने मोहम्मद हुसैन भाई को बुलाया था गज़ल गायकी के लिए फ़ौज में। अब सामने इसी तरह कुर्सियां तो बिल्कुल फ़ौज में खाली नहीं रहती हैं, वैसे साहित्य अकेडमी में ही रहती हैं। तो वो यूं आके बैठ गए फौजी, तो वो अपना राग मोहम्मद हुसैन साहब शुरू किया, फिर बहुत अच्छा गाया भी। अमीर खनफी की वो मशहूर गज़ल मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, बहुत शानदार, जिसका फारूक नाज़की साहब ने, मरहूम ने कश्मीरी तर्जुमा में वतन का शाही में उन वतन। तो उनको लगा मोहम्मद हुसैन को मैं अच्छा नहीं गा रहा हूँ कोई मुझे, तो कर्नल साहब आगे जो उनके सीओ साहब थे, उन्होंने कहा ताली। उसके बाद ताली इतनी बजी
कि अहमद हुसैन मासूम को बंद ही करना पड़ा गाना। तो कर्नल साहब को बाद में ख्याल आया कि मैंने तो ताली का आदेश दिया था, ताली बंद करने का भी आदेश देना होगा। तो वो जब आए कि ताली बंद, तो ताली बंद हो गई। तो अब यहाँ तो हमें, अब आजकल के लेखक को तो ताली मांगनी पड़ती है, ताली बोलनी पड़ती है, तो क्या करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर सुनने वाले, दाद देने वाले, समझने वाले 5 ही हों, तो ये बीमारी जो है ना शायरियों की, ये बहुत छूत-छात वाली बीमारी है। इसको ये एड्स कहिए, इसको कोविड कहिए, ये फैलती रहती है। क्योंकि अगर आप 10 लोगों को जमा कर दें, 9.5 तो शायर होंगे और आधा होगा सुनने वाला, वो मैं हूँगा। 9.5 तो शायर हैं। और ये, लेकिन अच्छी शायरी मुझे कम से कम सुनने को मिली। और चंद्रपाल साहब को भी, डॉक्टर शबनम को भी, और सागर सरफराज को भी, डॉक्टर गगन सिद्धू को भी, हलमन को भी, और बाकी जिनको मैं नहीं जानता हूँ। सत श्री अकाल महाराज, वो साहब वो भाग हैं आग। तो वो डीजीपी साहब रहे हैं, डीजीपी साहब रहे हैं। तो इनको भी लगा होगा कि जो लक्षण हैं अच्छी शायरी के इन बच्चों में बहुत अच्छे हैं। और मैं एक बुज़ुर्ग होके, बूढ़ा होके, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि इनको एक साहित्यिक जीवन में बहुत ही प्रबुद्ध हो, बहुत ही अच्छा हो, और ये वो आसमान छुएं कि जिसमें इन्होंने कभी सोचा भी न हो, कि ये लगे कि भाई ये तो बहुत ऊंचा बढ़ गया हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब कलाकार अपने आप को मुकम्मल समझता है, तो आप समझ लीजिए कि कलाकार की मौत होती है। कभी आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। हमेशा नीचे देखिए, ऊपर की तरफ जाइए, लेकिन देखते नीचे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छी एंकर हैं, दरअसल है आप सभी, जितने मैं हर जगह गया हूँ, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहिए, खुश रहिए। Thank you so much, Rafiq Sahab, for such illuminating session and with such wonderful concluding remarks. और आपकी जो कविता थी खाली डब्बा, वो थोड़ी सी मुझे ऐसे लगा, डर लग गया मुझे कि ऐसा अच्छा हम सब जाने वाले हैं। सो यू नेवर नो कि हम, हाँ सच है, लेकिन इतनी जल्दी सच ऐसे लगता है कि कैसे, ऐसे कैसे, नहीं नहीं। सो आप सब प्लीज आगे आ जाएं। आप सभी का एक बार बैठ जाएं आप पहले। काइंडली बी सीटेड सर। हाँ, एक बार बैठ के वी कैन हैव अ फोटोग्राफ। और यहाँ उपस्थित समस्त मंच का हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ हम इस सत्र से भी विराम लेंगे। आप सभी का भी आपकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लिखते रहें और हम सबको अपनी लेखनी से प्रेरित करते रहें। नमस्कार।